वो मेरे ख्याल से सही से प्लग इन नहीं हुआ होता। अब सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, इनको फ्री सही है। आज मैच नंबर 15 है एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम कंजाफी स्टेडियम, जहां पे फाटा खेलेगा हैदराबाद के अगेंस्ट। फाटा ऑब्वियसली अपना जो दोनों मैचेस हैं वो जीत के आई है। हैदराबाद के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। आई गॉट द टू गेस्ट, मेरे साथ हैं अली यूनुस और फाटा के स्टार फास्ट बॉलर सिराजुद्दीन। सिराज, पहले आपसे थोड़ी बात शुरू करते हैं। ऑब्वियसली आपका एक क्लैरिटी एज अ फास्ट बॉलर बहुत ज़रूरी है, तो क्या रोल आपको दिया गया है? विकेट्स लेनी है या कंटेन करने चाहते हैं? जी बिल्कुल। हर टीम में हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है। जिस तरह हमारे सीनियर कोचेज हैं रियाज भाई, सदीक भाई ने सब के साथ बैठ के बात की है। तो फॉर मी एज अ फास्ट बॉलर मिले ये है कि सर्कल में आके जितना कम इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करनी है, क्योंकि ये आजकल मॉडर्न क्रिकेट है। आपको पता होगा कि जितनी भी अपोजिशन की टीम है आपको पावर प्ले में जो है ना आप पे अटैक करने की कोशिश करती है। तो हमारी यही प्लान है कि पावर प्ले में हम अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दे और फिर आखिरी डेथ ओवर में जो है ना जितना हो सके कम से कम रन दे। तो यही बात हुई है मैनेजमेंट से। और अगर फाटा का देखा जाए तो पावर प्ले के अंदर इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली बॉलिंग पार्टनरशिप्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपकी क्या बात चलती है दूसरे एंड पे जो भी बॉलर आते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है आफाक अफरीदी दूसरे एंड के साथ दूसरे एंड से मेरे साथ स्टार्ट करते हैं सर्कल में। तो बस यही बात होती है कि जितना हो सके हमने टाइट बॉलिंग करनी है, बैट्समैन को रूम नहीं देना है। और यही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि ओवर का स्टार्ट और ओवर का जो फिनिश होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर वो अच्छा हो तो नेक्स्ट ओवर जो आता है ऑब्वियसली बैट्समैन पे प्रेशर बढ़ जाता है पहले से ही। आप कुछ पूछना मैं चाहेंगे? बस ये पूछना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि नया बॉल यूज़ किया, तो आपको कितनी जल्दी आपने एडजस्ट किया उसके साथ? जैसे अभी मरीना ने भी कहा कि इकोनॉमी सबसे शानदार है, तो कोई मुश्किलात आई इस नए बॉल के साथ एडजस्ट करने में? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अगर एक सीजन कंपेनर होता है तो रेड बॉल भी खेलता है, वाइट बॉल भी खेलता है। जो वो जब आप लोग रेड बॉल से वाइट बॉल पे की तरफ आते हो तो मुश्किल होती है अपने लाइन लेंथ में एडजस्ट करने में। लेकिन ये जो बॉल है आई थिंक इज सिमिलर टू द ड्यूक बॉल जो फोरडे में यूज़ होता है। तो आई थिंक मेरे लिए इतनी बड़ा इशू नहीं था एडजस्ट करने में। बॉल जो है वो अब देखने को आया कि ज़्यादा स्विंग हो रहा है, जो नया बॉल पीसीबी ने लगाया है। तो उस हवाले से क्योंकि स्विंग ज़्यादा है, तो कितना टाइम और किस तरह क्या टेक्निक आप करते हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए? बस यही है क्रिकेट में मेरे ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना आप चीज़ों को सिंपल रखते हो उतना चीज़ आपके फेवर में जाती है। तो बस मेरे लिए यही है कि चीज़ों को सिंपल रखें और अपने ऊपर ट्रस्ट और बिलीव रखें। चलें, थैंक यू सो मच थैंक यू। और ऑल द बेस्ट गेम के लिए। आज भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा स्टार्ट देंगे फाटा को। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। अब देखते हैं कि आज एक क्रूशियल मैच है, टाइमिंग्स चेंज हुई हैं। क्या कैप्टन्स के माइंड में चल रहा है इन कंडीशंस के हवाले से भी और मैच टाइमिंग के हवाले से भी। चलते हैं टॉस पे। Yes, all in order for the toss. This is match number 15. It's Hyderabad locking horns with FATA in the match number 15 of ABS Developers National T20 Qualifiers. The two captains alongside me, Shajil Khan for Hyderabad, Asif Afridi for FATA. Mr. Sohail Idris, the match referee, all in readiness. It's going to be Shajil Khan to flip the coin. Heads is the call. Tails it is. क्या करेंगे? हमारा बैटिंग का प्लान है पहले।
लास्ट मैच में भी बैटिंग की थी, रिजल्ट्स कुछ अच्छे आए नहीं, तो आप भी सेम करेंगे? जी सेम करेंगे। आज टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस है तो हम आज डे लाइट में बैटिंग करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपना अच्छा टोटल लगाएं और लाइट्स में बॉलिंग करेंगे। और सरफेस कैसा लग रहा है? फुल ऑफ रन्स ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आज इस पे कंटिन्यू तीसरा मैच है इस पिच पे, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखें, एक मैच जीते हैं, एक हारे हैं, तो अभी 2 मैचेस बाकी हैं, तो डू एंड डाई सिचुएशन है, तो कोशिश करेंगे अपना मैच जीतें, अच्छी क्रिकेट खेलें और इंशाल्लाह ग्रुप में टॉप करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स अ गुड टोटल बैटिंग फर्स्ट? देखें, अपना सरफेस बहुत अच्छा लग रहा है, कोशिश करेंगे अपना फाटा की टीम बहुत अच्छी है और कोशिश करेंगे कि 170 160 प्लस ऐसे स्कोर करेंगे टीम में इंशाल्लाह। चेंज? हाँ 2 चेंजेस हैं और मुस्तफ़ा नासिर की जगह हमने ज़ैनुल आबदीन को खिलाया है और एक हारिस खानज़ादा बीमार हैं तो उनकी जगह हमने अकबर को डाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आसिफ आफरीदी टॉस नहीं जीत सके, अगर जीते तो क्या करते? हमने भी बैटिंग ही करनी थी पहले। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है आपके, सारे बेसिस कवर्ड है, कोई ऐसा लगता है एरिया जिसमें स्टिल आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है एज अ टीम? नहीं माशाल्लाह, जिस तरह की हमारी बॉलिंग हो रही है, जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर वो जिस तरह का स्टार्ट हमें देते हैं, फिर बीच में जो स्पिन बॉलिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल में कंप्लीट टीम बनी हुई है। अब देखते हैं इस मैच में क्या होगा। आपका मोमेंटम बहुत शानदार चल रहा है, आप चाहेंगे कि फाइनल तक इसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाए? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बात तो यही होती है रियाज अफरीदी के साथ कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई मैच बिना हारे फाइनल तक जाए और फाइनल खेल सके और फाइनल जीत सकें। और इस टीम की आपको न्यूज़ को चेंज किया इस टीम में? हाँ 2 चेंजेस हुए हैं, एक आसिफ अफरीदी खेल रहा है और दूसरा समीन अफरीदी खेल रहा है। Right, all the सॉरी best. समी। Right, all the best. Thank you. ऐसा हो जाता है, no problem. Right, the news from the toss is that Shajil Khan from Hyderabad has won the toss and decided to have a bat first. And why he has decided that? I've got a very important man alongside me, somebody who knows the conditions very well here at Gaddafi Stadium, the former captain Salman Butt. Very good afternoon to you. Good afternoon to yourself as well, Ali. You And, and the surface. Surface is similar. It's not changed. It's been kept dry. Just a little bit of roll. So maybe with time, a touch of slowness, maybe, but nothing much of notice. Just the same application is required. I think Hyderabad have won the toss, and in daytime should be better off batting because in the night, under lights, the ball does do a bit more than normal. यही मेरा क्वेश्चन भी अगला था कि डे टाइम में बैटिंग करने में और शाम में अंडर लाइट्स बैटिंग करने में सलमान कितना डिफरेंस होता है? देखिए स्लाइड चेंज तो है, फ़र्क पड़ता है। रात को लाइटों के नीचे इस बॉल पे लेकर भी ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होती है कंपैरेटिवली। अगर दिन में बैटिंग आ जाए तो थोड़ा बेहतर है, ठीक है। और थोड़ा एडवांटेज शायद उनके जहन में भी हो के लड़कों के रोज़े हैं, ठीक है, तो उतनी एनर्जी नहीं होगी। बैटर्स के भी हैं बट देन बैटर्स जस्ट हैज टू स्ट्राइक, बॉलर हैज टू जस्ट कीप रनिंग एंड डूइंग द फील्डिंग, तो आप थोड़ा एडवांटेज वो भी ले सकते हैं। Right, you heard it from the pitch expert Salman Butt. He says nothing changes in this pitch. It's a beautiful surface as it has been throughout the tournament. We're expecting another great game of cricket, so enjoy it. Well, as we heard from the toss, Hyderabad opting to bat first और definitely afternoon game है, थोड़ा सा ये भी decision लेने में आसानी होगी। लेकिन comparison किया जाए दोनों teams के लिए tournament बहुत ही different चल रहा है। हैदराबाद की बात करें तो क्या लगता है कहाँ गलती कर रहे हैं ज़्यादा? देखिए सबसे पहले तो शजील खान को चलना होगा, ये तो उनके लिए सबसे मस्ट चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा उनकी जो बैटिंग है वो डिपेंडेबल है शजील खान पे। अगर वो रन्स नहीं करते हैं तो वो उनका ऐसे लगता है कि वो मोमेंटम टीम का बन ही नहीं पाया। हसनैन इज़ लुक्ड गुड, एटलीस्ट जितना वो कर सकते थे इस टीम के लिए वो कर रहे हैं। नोमान अली भी उस तरीके से T20 स्पेशलिस्ट तो नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है उनकी वो है शजील खान के ऊपर, और वही उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाया। तो आई थिंक जो उनका ड्रॉबैक मैं कहूँगा इस टीम का, ओवरऑल ठीक टीम लग रही थी मुझे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, बट शजील खान का ना स्कोर करना उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक लग रहा है। आज ऐड किया उन्होंने, बैटिंग स्ट्रेंथ ऐड की है अपनी, और ऑब्वियसली कंडीशंस जो हैं वो इतनी थ्रेटनिंग नहीं है। तो आपको लगता है कि अगेन जो स्टार्ट है वो शजील खान पे ही रहेगा, या थोड़ा सा वो अपने जो अटैकिंग मोड है उससे हट के उन्हें खेलना चाहिए? देखिए कंडीशंस थ्रेटनिंग नहीं है तो कंडीशंस तो जो आपकी अपोनेंट्स है वो तो थ्रेटनिंग है, क्योंकि सबसे बेस्ट साइड हम कहेंगे फाटा की है जिनके अगेंस्ट आज उनका मैच है। देखिए शजील खान ऐसे प्लेयर है, व्हेन ही गेट्स गोइंग तो वो उनके लिए कोई भी बॉलर्स हों आगे तो वो अपनी तरह से ही बैटिंग करते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज भी हैदराबादी होप कर रहे होंगे कि शजील खान के बल्ले से रन्स निकले, क्योंकि एक तो वो फिर बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं और बहुत तेज़ रन्स करते हैं। तो अगर वो चल पड़ते हैं तो आई थिंक हैदराबाद चैलेंज कर सकता है फाटा को। फाटा की बात करें तो दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं, और जो दोनों मैच जीते हैं उसमें पहले बैटिंग की है,
तो ये थोड़ा सा उनके माइंड में ये चीज़ आ सकती है, इवन तो के सारे परफॉर्म्स कर रहे हैं, मैच विनर्स हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रिगर करेगा। देखिए इस मैच के लिए तो आई थिंक इसको ट्रायल बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि 2 मैचेस जीते हुए हैं, थोड़ा सिक्योर पोजीशन में है। ये मैच जीत जाएंगे तो बिल्कुल 100% अगले फाइनल के लिए तो एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एटलीस्ट इन अ वे अच्छी बात है कि अगर फाइनल के अंदर ये सिचुएशन आती है जहाँ पे उनको बाद में बैटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट स्टिल ओवरऑल जितनी बड़ी वो साइड है, दे टेक ऑल द बॉक्सेस। उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास बैटर्स हैं, उनके पास डेप्थ के अच्छे बॉलर्स हैं, फिनिशर्स हैं बैटिंग के अंदर, ओपनर अच्छे हैं उनके पास। सो यू नेम इट, इस टीम के अंदर सारे बॉक्सेस हैं उनके पास टिक किए हुए उन्होंने। तो सिर्फ वही देखना है कि आप सेकंड बैटिंग करते हो कैसे एडजस्ट करते हैं कंडीशंस को। दैट्स द ओनली थिंग टू लुक आउट फॉर देम। Well, one thing to look out is कि हैदराबाद इस गेम को कैसे अप्रोच करता है, and it's going to be a good game with FATA bowling first and Hyderabad setting the total. Let's go to the com box for the action. बहुत शुक्रिया। और ये अब आज चमकती धमकती दोपहर है। जैसे आपने सुना कि टॉस जीता हैदराबाद ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उसकी वजह मैच की औकात कार में तब्दीली है। इसको अब तब्दीलशुदा प्रोग्राम के तहत अब 4 बजे मैच शुरू होगा। टॉस हो चुका है और हैदराबाद ने जो जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, उसकी वजह ये खूबसूरत, जिसका भी सलमान भट्ट साहब ने जिक्र किया, कि वाज़े, शफाफ और अच्छे तरीके से रोल की गई विकेट है। और इस पर शर्जील एक माने हुए शॉट मेकर हैं, स्लॉग अच्छी करते हैं और उनकी जो हैमरिंग है, besides his other colleagues, would be treat to watch. FATA is a team which is coming up. 2 मैच उन्होंने जीते हैं और आप फिर तो रवा में देख रहे हैं कि यहाँ लाहौर में ट्रैफिक रवा दवा है, बाहर रमज़ान है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी लाइव बिजी है। दोनों अंपायर जो हैं वो अब दाखिल हुआ चाहते हैं, उनके दाखिल हो चुके हैं, इमरान असलम और मोहम्मद आसिफ। तो ये आप देखते हैं कि ये जो आजकल के अंपायर हैं, ये प्लेयर्स की तरह फिट होते हैं और उनको सुपर फिट अपने आप को रखना होता है, क्योंकि आईसीसी ने सिस्टम में कुछ SOPs भी जारी किए थे आज से कुछ वर्ष पहले। तो ये दोनों अंपायर्स हैं आज के मैच के। आसिफ ने बड़ी क्रिकेट खेली हुई इस मैदान में, मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और ये बड़े शॉट्स में होते हैं। ये टीम है, दोनों टीमें हैं हैदराबाद रीजन और फाटा रीजन की। शजील खान लीड कर रहे हैं, उबैदुल्लाह और दीगर खिलाड़ी आपने देखा कि नामी ग्रामी हैं, ये बड़े स्टैब्लिश हैं। ये मंजर है PCB के हेडक्वार्टर के ऊपर से और सामने मीडिया सेंटर है। बड़ा दिलकश और खूबसूरत मंजर है और दोनों ओपनर्स अब मैदान में दाखिल हुए ज़ाहिर है कि हैदराबाद के, और इनको अब ये पावर प्ले में ज़बरदस्त सिटिंग करना होगी, दाएं और बाएं जाने पूछे स्ट्रोक खेलने होंगे। ये इवेंट हर लिहाज से बड़ा शानदार है, इसलिए कि अभी सिर्फ प्री क्वालिफायर है और जब ये टीम है जिनमें बेशतर टीमें जो हैं वो उनमें तगड़े खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेटर्स उभर के सामने आए भी हैं और ये सब कुछ जो कुछ हुआ हमने आपके लिए लाइव ब्रॉडकास्ट पेश किया बसिलसिला ABS डेवलपर्स नेशनल T20 क्वालिफायर 2025-2026। बस में दोनों ओपनिंग बैट्समैन पहुंच चुके हैं, आप विकेट देख रहे हैं। इसके बारे में सलमान भट्ट ने अली यूनुस साहब से मिलकर ये बताया कि ये विकेट बड़ी अच्छी है, बड़ी बैटिंग के लिए साजगार है। जहाँ तक दोनों बैट्स का ताल्लुक है, ये वैसे देखने में भी सुपर फिट हैं और जब इनको गेंदें आगे मिलेंगी पीछे मिलेंगी, फिर ये पहले 6 ओवर्स में जो पावर प्ले का खेल है इसमें किसी पूरी गेंद को बख्शेंगे नहीं। तो ये सब कुछ जो कुछ है ये T20 का खासा है। अंपायर से गार्ड ले लिया गया है और बहुत जल्द अंपायर कॉल करेंगे प्ले। आज यहाँ पर जो दीगर ऑफिशियल्स हैं उसमें TV अंपायर अब्दुल मुकीद हैं, जबकि अहमद शहाब जो हैं वो 4th अंपायर हैं। मैच रेफरी सुहेल इदरीस हैं। तो ये जाने माने नाम है आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के और ये इस मैच को रन करते हैं। वैसे बलहाज ओहदा मैच रेफरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर चीज़ के निगरानी आला होते हैं, वो कब्ल से वक्त पहुँच जाते हैं। बल्कि अगर किसी दूसरे शहर में मैच हो तो एक रोज़ पहले ही जाकर क्रिकेट की जो कंडीशंस हैं उनका और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका मुआयना करते हैं। तो बहुत जल्द खेल शुरू होगा और यहाँ पर धुआंधार बैटिंग होगी। हैदराबाद उबैदुल्लाह और हिज अदर कोलीग जो कि शजील खान है, आप उनके नाम और उनकी जो बैटिंग क्रेडेंशियल्स हैं उनसे वाकिफ़ हैं। ये अब ज़ाहिर है कि आसान काम नहीं होगा, आगाज़ी से प्रेशर होगा बॉलर के ऊपर। वो कोशिश करेंगे कि गेंद ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़ा अनसर्टन एरिया हो, लेकिन शजील और उबैदुल्लाह जो हैं ये अच्छे पिंच हिटर हैं। ऑफ साइड की फील्ड आप जुज़वी तौर पर देख सकते हैं, पॉइंट और कवर के अलावा डीप थर्ड मैन है बाउंड्री लाइन के अंदर और ये वो वाहिद फील्डर है जो कि ऑफ साइड पर सर्कल से बाहर है। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग है, पहली गेंद दिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर।
इस तरह शर्जील ने पहली गेंद खेल ली है और किसी हद तक आफाक ने ये बेहतर गेंद दी की, लेकिन शर्जील का बल्ला जो है वो ज़ाहिर है कि रन उगलेगा। इससे हाइट का और इसकी जो प्रेसिडनेस है, जो इसका सीधापन है, उसका अंदाज़ा हो गया होगा आपको। सलमान बट भी आ गए हैं और ये बहुत जल्द बताएंगे कि यहाँ पर हालात के पेश नज़र कितना स्कोर मुतवक्के है। आफाक गेंद करेंगे, ऑफ साइड और ऑन साइड की फील्ड आप देख चुके हैं। लीजिए, ज़बरदस्त हिट है, इसलिए कि ऐसी जगह पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं होता है। क्लूज गेंद थी और शजील ऑन साइड पे बड़े तगड़े हैं, खासतौर पे अगर उनको शॉर्ट गेंद की जाए। जी हाँ, लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया है। शॉर्ट हम जैब मारते हैं, ये पूरी पुल नहीं मारते। और इस बार बिल्कुल ग्राउंड शॉट था, ये पूरे कंट्रोल में थे। और आफाक अफरीदी जो हैं वो स्विंग बॉलर है, ये लेंथ पे उनके लिए मसाइल होंगे क्योंकि शर्जील इस लेंथ को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो थोड़ा आगे गेंद करना उनके लिए बेहतर है। ये बेहतर है, थोड़ा सा अगर इसको ऑफ स्टंप पे लेके जाते हैं तो आइडियल भी हो सकता है। दिन के वक्त गेंद को शायद उतनी मूवमेंट ना मिले जो हमें नज़र आती है अंडर लाइट्स। वाइट बॉल हमेशा से अंडर लाइट्स जो है थोड़ा सा मूव करता है ज़्यादा। ये अच्छा टॉस हैदराबाद ने जीता, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी टीम फाटा की, इनको अच्छे रन्स भी करने होंगे और पूरा मैच ही अच्छा खेलना होगा। बॉलर्स को भी हैदराबाद के एक कमबैक करना होगा। बेहतर गेंद थी, ये वो लाइन है जो कि रवायती तौर पर बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स के लिए एक दर्द सर होती है। मिडल और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद और शजील बावजूद कोशिश से इसको खेल नहीं पाए। जी हाँ, ये बहुत ही उम्दा लाइन थी, इसी की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा उसको ऑफ स्टंप से आए और वहां से गेंद अपनी करें। थोड़ा सा आगे भी की ये गेंद, यही आफाक की खासियत है। स्विंग बॉलर हैं, अच्छी लेंथ को हिट करते हैं और मसाइल पैदा करते हैं बैटर्स के लिए। अगर आप जो लेग साइड है, ये जो लेग स्टंप है, इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें तो बाज़ औक़ात ये कुछ देर के लिए हिकमत अमली कारगर साबित होती है। लेकिन शर्जील जो हैं, अगर वो धारे के पीछे हट जाते हैं और कलाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी कम अज़ कम एक सिंगल था। ऑन साइड पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शर्जील ये जो इस वक्त आपके सामने इनके लिए एक फील्डर खड़ा किया गया है चौका रोकने के लिए। ये कन्वेंशनल पोजीशन होती है, यहाँ पर इब्तिदाई में गेंद बार बार जाती है। बीट हो गए, लगता है शर्जील पूरे तरीके से एक्लेमेटाइज नहीं हुए, अभी हैरान है गेंद कहाँ से आई, कहाँ चली गई, लेकिन दाद देना होगी आफाक को। पहला ओवर खत्म हुआ, हैदराबाद 4 बगैर किसी नुकसान के। सिराजुद्दीन लंबे तिरंगे हैं, मजबूत कदोकामत के मालिक हैं, बड़ी अच्छी लाइन और लेन से गेंदें करते हैं। लेकिन ये T20 की क्रिकेट है, इसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बैटर डोमिनेट करते हैं। बेहतर गेंद टू स्टार्ट विद, फॉर लेंथ मुश्किल पेश आई, बहरहाल 1 रन का इजाफा हो गया। उबैदुल्लाह ने अपना खाता खोल लिया। बहुत ही उम्दा गेंद थी, यॉर्कर लेंथ बॉल थोड़ी सी अंदर आई और उबैदुल्लाह को भी कहना होगा कि बहुत ही उम्दा खेले इस गेंद को, आखिर तक गेंद को देखा है। अच्छी क्रिकेट। हैदराबाद की टीम को पार्टनरशिप चाहिए। कमबैक का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पिछले मैच में जब इनके खिलाफ चेज किया भावलपुर ने तो बॉलिंग
नपी-तुली नहीं थी, और उस तरह की बॉलिंग होगी तो फिर बहुत मसाइल होंगे। जितना उम्दा पहला गेंद किया, उसी कदर खराब ये वाला गेंद किया है, टांग से बाहर वाइड गेंद। बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स के लिए इस किस्म की दिक्कत कभी न कभार दरपेश होती है, और यही कुछ सिराजुद्दीन ने किया। आउटसाइड द लेग स्टंप, जैसे आपने कहा कि ये खराब गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन बैटर ज़ाहिर कि इसमें बड़े कंप्लेसेंट होते हैं कि अगर लग गया ठीक है, वरना एक रन तो कहीं नहीं गया। और एक एक्स्ट्रा गेंद भी। शर्जील टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। विकेट के बारे में बताया गया है कि ये बैटिंग के लिए साजगार है। तेज़ धूप है, कट अच्छे कट है, लेकिन सीधी बैकवर्ड पॉइंट पर, इसी मकसद के लिए इनको यहाँ खड़ा किया गया था। बिल्कुल बल्ले के बॉटम पे लगी। शर्जील कदमों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, जिस वजह से जब गेंद थोड़ा सा बाहर होता है तो देखिए ऐसा लगता है बहुत दूर से खेला। बैकफुट अगर बॉल की तरफ जाता तो शायद ये कट अपनी मर्जी से मारते ही है, लेकिन यहाँ पर बॉटम लगा और थर्ड पे बॉल गई है। तवातर के साथ गेंदें लेग स्टंप से बाहर अब जाना शुरू हो गई हैं, जो कोई अच्छी बात नहीं है। सिराज की लेंथ तो ठीक है, लेकिन लाइन जो है उसमें ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये शुरू में जो इजाफी रन हैं, एक तो पावर प्ले में नियतन उबैदुल्ला और शर्जील जो हैं वो बड़ी बड़ी हिटें लगाएंगे, इस्तेफादा करेंगे जो एक फील्डर की बंदिश होती है कि आप दो फील्डर जो हैं वो 30 गज के सर्कल के बाहर खड़े कर सकते हैं। ये गेंद मीलों दूर थी बैट से। सिराजुद्दीन दूसरा ओवर कर रहे हैं, सटपट दौड़ते नहीं हैं, आराम आराम से आते हैं झूमते हुए। ऑन साइड पे घुमाने की कोशिश की और उसमें अभी एक और वाइड। इधर बताइए भट्ट साहब, ये तवातर से वाइड क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से रोका जा सकता है इस अमल को? देखिए ये तो अब आपकी प्रैक्टिस पे मुनहसर है, और कई बार ये भी बड़ा ज़रूरी होता है देखना कि क्या बॉलर ठीक भाग रहे हैं, उनके भागने का रिदम ठीक है या स्टेप छोटे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब स्टेप ठीक नहीं होते तो फिर कई बार नो बॉल भी हो सकते हैं, वाइड्स भी हो सकते हैं, और कंट्रोल आपका जो है वो सफ़र करता है। ये अच्छी गेंद अंदर आई, अच्छी लेंथ पे थी, अच्छी डायरेक्शन। काफ़ी तगड़े हैं सिराजुद्दीन, बहुत अच्छी पेस पे बॉलिंग करते हैं। कंट्रोल जो है वो बहरहाल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका होना आपकी बॉलिंग के मेयार को बुलंद करता है। अगर कंट्रोल कम है तो फिर किसी वक्त भी आप बैटर की जद में आते हैं और फिर आप अपनी टीम के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं रहते। अपराइट स्टांस है, ये जरा अपराइट स्टांस पर रोशनी डालिए। क्या ये थका देने वाला अमल है, या आप समझते हैं कि नहीं बैट्समैन अपने आप को विजिलेंट रखते हैं इसलिए ज़रूर है? बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि गेंद पर ताक़ीद से पहुंचते हैं, अगर इसको हम देखें। देखिए पोजीशन नहीं बन रही, आप ट्रिगर मूवमेंट करते हैं, स्टांस में आप रिलैक्स्ड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, और उसके बाद एक मूवमेंट होती है ट्रिगर मूवमेंट, जो आपकी मूवमेंट को करने के लिए एक स्टार्टअप होता है, स्टार्टर होता है, वो ट्रिगर जिसे कहते हैं। इस बार ऑन साइड पे बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, एज ही हुआ है। अपनी शेप लूज करते हैं, ना पूरा आगे आते हैं ना बैकफुट पे जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स का ये मसला देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर कि फीट मूवमेंट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इस पिच के ऊपर आप बड़े आराम से आप बैकफुट पे ज़्यादातर गेंदों को खेल सकते हैं। सिर्फ जो गेंद बहुत आगे आएगी उस पर तो आप खुद ब खुद आगे चले जाते हैं अगर आपने फीट मूवमेंट पे काम किया हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कदमों का इस्तेमाल जो है उसकी अहमियत से वाकफियत नहीं है इतनी। वो जो हम बात कर रहे थे उसका दोहरा नुकसान हुआ। ये वाइड के अब 5 रन हो जाएंगे और सिराज अनकंफर्टेबल हैं। ये जो हंगामा के पहले पावर प्ले होते हैं वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्रिकेट क्वाइट है, खामोश है। शॉर्ट फाइन लेग खड़ी है दायरे में और ये चौथा वाइड है लेग साइड से, तो कप्तान को शायद देखना चाहिए कि
ये बॉलिंग जिस लाइन पे कर रहे हैं इनको तो एक लेग स्लिप दे देनी चाहिए, लेकिन अब क्रॉस सीम पकड़ा इन्होंने गेंद को, इस ताकमत के गेंद स्विंग ना हो। ये देखिए सीधा रहा गेंद और एंगल से बीट किया है शर्जील को। और बैटर्स के लिए भी एक डायलेमा सा होता है, कोई अंदर गेंद कोई बाहर। 2 ओवर्स का अख्ताम, हैदराबाद 14 बगैर नुकसान के। थैंक यू। ये आगे पड़ी हुई गेंद थी। अब ये भी बॉटम ऑफ द बैट, जैसे आपने पहले जिक्र किया था, गेंद लगी है उस जगह नहीं गई जहाँ पर इसको जाना चाहिए था, और वो थी कवर बाउंड्री के बाहर। 2 रन का इजाफा हुआ है। तो इस बार उबैदुल्ला थे। जी हाँ, और जब हमने कदमों के इस्तेमाल का जिक्र किया, एक बार फिर आप अगर इस गेंद का रीप्ले देखें तो आप ये बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं कि कदम जो है वो बहुत लिमिटेड मूवमेंट है, गेंद के ऊपर पूरा नहीं जाता है। ये देखिए जहां पर ट्रिगर मूवमेंट खत्म हुई वहां पे ही पावर रहा, और उसके बाद सिर्फ हाथ गए हैं। ये देखिए एक बार फिर कदम वहीं जमे हुए हैं। सो ट्रिगर मूवमेंट के बाद एक फाइनल मूवमेंट होती है जो कि शॉट की एग्जीक्यूशन के हिसाब से होती है। यानी कि अगर अगला गेंद है और आप ड्राइव मारना चाहते हैं तो फिर आपकी अगली टांग गेंद की पिच तक जाएगी, उसके करीब जाएगी, लेकिन ये देखें ट्रिगर और उसके बाद कुछ भी नहीं। और एक ओपनर के लिए अगर ये वाला मसला है तो ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको ये काम ठीक करना चाहिए। जो बुनियादी चीज़ बताई जाती है वो वी शेप है कि आप नया गेंद खेल रहे हैं, खा आप वाइट बॉल क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है, वी में खेलने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर तो ना तिरछी शॉटें लग रही हैं, ना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, ना बैक फुट पे जा रहे हैं। और ये एक और ख़तरनाक तरीका था गेंद को खेलने का। आफाक ज़ाहिर है कि मुतमईन है अपने बॉलिंग के ओवरऑल स्टैंडर्ड से, क्योंकि 12 ये बाय का रन था। और इसमें विकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई ऐसी कोई गैर मामूली सपोर्ट बॉलर को है नहीं। गेंदें मिडल होनी चाहिए, कुछ गेंदें ज़ाहिर है कि मूव हो रही हैं वो उसमें। ये पावर प्ले देखिए अगर इसमें व्हाट्सअप रोशनी डाली है जो फाटा ने सबसे उम्दा बॉलिंग कराई है, इकोनॉमी रेट 4 से भी कम है, और लीड कर रहे हैं इस टेबल को इस चीज़ के अंदर। इस बार कट किया शर्जील ने, थर्ड के फील्डर गेंद तक पहुंचे जल्दी से और एक ही रन बना। करना चाहते थे तो एक हाफ हार्टेड सी, और खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद ऑफ द एज जो है फाइन चला गया। लेकिन ये स्वीप की एग्जीक्यूशन के लिए ये अच्छी पोजीशन नहीं थी क्योंकि सर इनका पीछे था। अगर हम साइड एंगल से दिखा सकें तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए जब नीचे जाते हैं जो सर है बैटर का, हेड जो है वो नी रोल से आगे होना चाहिए स्वीप करने के लिए। अच्छी गेंद, और नईम ने इस ओवर का अख्ताम किया डॉट के साथ। हैदराबाद 23 बगैर नुकसान के। हसनैन बेहतर अंदाज है इस बार। ये फिर भी जितने भी पहले गेंद खेले उससे वो एग्रेशन था जो कि इस वक्त चाहिए। और इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो T20 में जो प्रॉपर शॉट्स होती हैं उसमें शर्जील ज़ाहिर है कि एक बड़ा नाम है। अगर देखें जिस तरीके से पुल किया,
फिर खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश अबैदुल्ला की और उसमें नाकामी। मुतादिद बार ऐसा हुआ है। गेंद के कहीं करीब भी नहीं था इनका बैट। सराजुद्दीन दूसरे एंड से अब गेंदें कर रहे हैं। अच्छी गेंद, लेंथ भी अच्छी थी, गेंद वापस आया बाहरी किनारा, थर्ड की तरफ एक ही रन बनेगा। खुशकिस्मत रहे हैं अभी तक उबैद, जितने शॉट इन्होंने लगाए हैं काफी बार बचे हैं, आउटसाइड एज से भी बचे हैं, एज भी हुआ है, स्वीप पे भी जो चौका लगा है वो भी इनसाइड एज था। शर्जील का बड़ा स्कोर करना जरूरी है अगर हैदराबाद ने कोई बड़ा टारगेट करना है। जब मैंने इनको गन इंस्टीट्यूट में देखा था गुज़िश्ता बरस, तो उसके बाद अब इन्होंने अपनी फिजिक को काफ़ी बेहतर किया। थोड़े ओवरवेट थे लेकिन अब काफ़ी फिट दिखाई दे रहे हैं। शर्जील खान बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर हैं, इनको एक एडवांटेज है, एक दराज कद हैं, मजबूत कद-ओ-कामत के मालिक हैं और एक इनकी आलमगीर शोहरत है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक मरतबा फिर नाकाम हुए, अपील कारगर साबित नहीं हुई। आसिफ है, मोहम्मद आसिफ, लेग बाय। बदतरी जन बन रहे हैं लेकिन वो जो एक रन्स बनने की एक रफ्तार होती है उसमें काफ़ी गिरावट है। ये कोशिश थी और उसमें नाकामी हुई शर्जील को। सीधी फील्डर के पास, तो इस तरह ये भी एक अच्छा ओवर रहा। तो अब 5 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। 27 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। A very tentative start for Hyderabad, winning the toss, opting to bat first. And conditions seems easier as it is an afternoon game, but obviously the bowling from FATA, fast bowlers in particular, just creating some room, smashed it through covers for 4. Yeah, that's an ideal length and great pace also to be playing that shot. Waited enough, placed it perfectly. Ubaidullah looks a good deal. Have a look at this. If you ball those quick deliveries and batters are ready on the back foot, they can place you beautifully to get boundaries. Got to be very particular as a spinner. Had to change the line, and it's expensive from Naim. Straighting down the leg, Ubaidullah makes full use of it. 2 good shots. He was struggling a little bit early on, but now should get some confidence out of it. Yeah, I wonder if we have seen Naim ball before. Not much. So if you're a non-regular bowler and you're asked to bowl in the power play to the 2 batters who've got intent of big hitting, then
then that's trouble for you. That's what's happened here. One side, one boundary on the offside, the other one towards the onside. Change in field. Mid-off drops back. Mid-on in circle. Again creating room on this occasion. Naim following Ubad. Yeah, they need to think about scoring runs quickly now, Hyderabad. We know the batting lineup for FATA. We have to put something on board. Soft hands. Good attempt from Naim. Yeah, I like what Shajil Khan said at the toss, that he is hopeful that he will top the group. Even after losing one game, he still has that. They're eyeing on that. If they beat here, if they beat FATA here, and then you just never know what happens in the last game of the pool. So that's why you see a change in approach from Shajil. You said that the pre-match show, you asked me if you'll see a change in the approach, and we actually are seeing the change in the approach. He's taking his time. He understands the value of his own wicket, that longer he stays, more chances are there for Hyderabad to go big. Talking about big, ABS developers, they're big. World's first Sharia compliant real estate agency. This one is in there, but there is no one. That's gone. One bounce and over the boundary line for 4. This is good from Hyderabad. Finally, we're seeing what we want to see from them. Some boundaries. 41 for none after 6. Yeah, good over for Hyderabad. Last one. Naim was expensive. Not sure why he changed that field, brought mid-on inside. And he wasn't turning the ball. He was deliberately bowling quicker ones into the left-handers, and that made an easy angle for Shajil to hit him over mid-on. That was the previous shot. Asif Afridi picked up, tossed up nicely, gets behind it and goes all the way for 6. Yeah, that's the Shajil Khan we all want to see. So comfortable playing those big shots. Doesn't get any easier than this. That's gorgeous. That's right in the zone. Great swing of the bat, knee down, ball up. It's wonderful hitting. This is good. This is a different Shajil Khan today. He's valuing his wicket. He wants to stay there. He wants to get a big one for himself, for the team. Yeah, we saw Hyderabad in so much trouble against Bahawalpur. Once the top order got out, they were just scampering through to score runs. Again tossed up. This one is given out. Trying to replicate what Shajil was doing. Going for the big shot. And FATA has their first. Yeah, he's not happy. Wonder because of himself, the shot he attempted, or maybe the inside edge getting to the pads. We'll have a look at it again, but surely he should be very disappointed by himself for that shot. Yeah, no problems here. Doesn't seem to be an inside edge, can't tell. Umpire has given him out. Nevertheless, he's given Hyderabad a good start. Ubaidullah Ropoto goes after scoring 22. It's 53 for 1. Rizwan Mahmood now comes out to bat. He's got a solid foundation. He's got the destructor Shajil Khan on the other end.
Good start for Hyderabad. 53 for 1. He can bat, he's got potential. Yeah, just Asif Afridi understand that he's got the breakthrough. Just needs to put the brake on run scoring also. And it's a change in strategy from Hyderabad also. They've promoted Mahmood because they want that run scoring to continue. Yeah, slow through the air, just around off stump. Yeah, that will be in their mind, the batting lineup for FATA. Tossed up nicely, just came back in. Going across the line, a wild swing. It was a little bit fuller for that shot. That'll be an easy one. Yeah, fuller and slower. The one that Shajil Khan hit, it was quicker in pace. But this one much slower, that's why he was beaten. End of the over, a successful one. It's 49 for 1. Khubab Khalil is also a very good prospect. Early on I was talking to Riaz Afridi and he speaks very highly of him. And he said he's one to watch in the future. Obviously he's got a good company around, Sirajuddin, Afaq, Afridi. Can learn a lot from those guys. Straying down the leg. Yeah, not just around in the team. He's got a very impressive company in the dugout also. They've got Sameen Gul sitting there, a very experienced swing bowler. Salman Khan also, good fast bowler. And the two you mentioned are playing with him. Riaz Afridi himself, test fast bowler. So it doesn't get any comfortable in this for a young fast bowler. Oh, a little bit of shape, good line and length. There is one, just trying to guide it to the third. This is one thing where I do have my pet peeves for top order batters. When the ball is swinging, they just like to provide a minimum of footwork and just the hands doing the talking. At times they do get out, most of the times they do, rather than getting behind the line and playing it in front of square. Charging down. He's in a hurry. This is the second ball he's faced from Khubab. First one he was beaten. And straight away you can see the urgency. Yeah, that seemed away after pitching. Khubab. Yeah, that's a good sign. Shajil going up to him and saying, just relax, that's okay. Yes, you have played 5 dot deliveries, just 1 run of 6. The best he can do is just rotate the strike, give the strike back to Shajil and let him do the big hitting part. Oh, he's asking for the appeal. The keeper is up as well. The umpire seems not interested. Yeah, even you need to get something on the bat. Khubab is bowling good line and lengths. Rizwan has just scored 1 of 7 deliveries and he's charging, probably brushing the thigh. He hasn't middled anything and he's looking to slam Khubab for big shot. It's the mindset, isn't it? He's come up with the mindset of being ultra positive. And in doing so, he's just forgotten the basics. Although in the previous game, he was very sensible, very smart. He took the inning deep. But somehow he seems a little all over the place in this inning. The pressure of scoring quick runs
is what I can think of. Yeah, but there has to be a way. You need to obviously middle few. You have to be proactive. I do understand the intent is there. But what he's doing right now is just wild swings, getting beaten every time, and that adds the pressure, the dot balls. Again, good line, good length. He'll pick up single and keep the strike. Hyderabad after 8, 51 for 1. Beautiful view of Qaddafi Stadium. And as the evening is getting closer, an afternoon game, change in timings. Asif will continue. This is much better. A word from Shajil obviously must have helped him. Yeah, Shajil has got the strike back after 11 deliveries. And we know that a player like him, when he's on song, he likes to be on the strike. Let's see what changes. Does that frustrate him? Will he be smart enough to continue batting and be there for the team? No, it was in the slot, but will get a boundary for sure. Good effort there, but it was slammed hard down the ground by Shajil. He hits them so hard. Brutal. That's the word that defines that power that Shajil has. Pitched up. Remember, there was a fielder placed at long on, but he played it with some force that he had no chance even. Smart approach by Shajil. He's waiting for the delivery to be in his zone and then look to go big. Oh, good delivery. And bit of a confusion in the middle. Throw should have been at the bowling end. And Rizwan was all the way down in the middle. And Shajil wasn't watching him. Although it was Rizwan's call because the ball went towards the 45. But Shajil probably was not interested. He wanted to keep the strike maybe. He was not eager to get to the other end. But Afaq Afridi, the fielder at that point, he was not even looking at the non-striker. All he was thinking was at Shajil's end, and he didn't move. Maybe again have a look at this. We have seen some bizarre run-outs in this tournament. We don't want to see another one. He's a smart bowler, Asif. Never afraid of getting hit. Will always come up with a good follow-up delivery. And the previous one was one of those. Just making sure that everything is under check. Down the ground. Picked up nicely. This is one of his strengths, and it's gone over for a 6. Yeah, now you understand why he denied the single on the previous delivery. Because he understands the ball is coming into him. He's creating that angle, and the intent is quite clear. Down the track he comes. As Chishti Mujahid would say, out he comes and up she goes. For a 6. Beautiful batting. Yeah, it's not going to turn a lot. There's not much purchase in the surface. Asif Afridi will have to come up with a plan. Not easy. While bowling to Shajil. Anything just around that off stump or even around 5th stump, he can just reach out and take you on through the leg side.
And he's such a powerful man that, and a great timer of the ball also. So the combination of power and timing makes him so brutal. The previous delivery, he just stood, went down, one knee went down, and he just bamboozled. The next one came down the track and hit in the same area. When he gets going, there's nothing you can do as a bowler, seriously. 21 coming off last 7 deliveries, courtesy to some big blows from Shajil. Only for Shajil. The 7 deliveries he's faced, he scored 21 runs. 11 already off this over. Slower through the air. Smart cricket, just nudging around, keeping the strike. Hyderabad 63 for 1. Gorgeous looking Qazafi Stadium. ABS Developers National T20 Qualifiers are underway. You are getting the pictures on your home screens, but it's a different experience once you come to the stadium, watch your favorite stars live in action. So make your way, the entry is free. Outside off stump. Oh, misfield. This is going to hurt FATA. That's not what they want, and that's not what we expect of them. Yeah, they set high standards for themselves. They are the team to beat in this tournament. They're full of stars, but the only weakness that I see in this team is a extra spinner alongside Asif Afridi. Yes, they have Khoshdil Shah, but then again, we cannot really count him as a proper spinner. He's a batter who can bowl well. So that's the only weakness we see in that FATA side. Naim is a part-time bowler. He's appealing for it. Imranullah says no. Yeah, Rizwan is clearly struggling. There's no foot movement. He's not picking the line, neither the length. Just stuck at the crease. Look at that. Front foot going nowhere. And an angled bat coming down. Doesn't look confident at all. Yeah, that's much better. Just rotating the strike, bring Shajil back on. He's much more settled. 29 of 23. Right, the University of Lahore. A quarter century of building a legacy. Sensational stuff. $65 for 1. Yeah, good line. They've got the protection. 3 men patrolling the leg side boundary. Deep mid wicket, long on, deep square leg. And they're just trying to keep tight line within the stumps. We know that he's very comfortable. Anything off the pads, he will dispatch. They've got protection in deep cover as well. If you pitch it outside off, he can go after you. Margin of error against Shajil is very small. This is much better. Tighter lines, not much room to maneuver with. Yeah, this is where you can ball and not get hit. Because, as you said, the margin of error is so less that if you are slightly towards onside, he will flick you. If you go outside the off stump, he's got the power to drag it and play towards mid wicket or even cut also. So he's got the range.
So it's just about his day, his mood, his zone, his vibe, whatever he's getting that day. Hopping, creating some room. Hubab tried to follow, will scramble on to get a boundary. Yeah, not an ideal way to finish the over. 10 done, 70 for 1. And it's time for just a break. ग्राफिक्स वो 10 का तो मुझे पता है, 70 for 1 चला है ना। सर्वर आए हैं नए आने वाले बॉलर और आते ही लॉफ्टेड ड्राइव कर दिया है शर्जील ने 6 रन्स के लिए। जबरदस्त शॉट, हैदराबाद 76 पर पहुंच चुका है। बहुत ही उम्दा लिफ्ट किया इस गेंद को, बिल्कुल स्लॉट में था और पूरे बल्ले के साथ हाई एल्बो, और ये वो गेंद है जिसके लिए शर्जील को मूव नहीं करना पड़ा, बिल्कुल जहां वो खड़े थे वहीं से ये शॉट बन गया। सरवर अफरीदी का लूजनर कह लीजिए, लेकिन शर्जील नहीं बख्शेंगे इस किस्म की बॉलिंग को। अब जबकि वो सेट है 36 रन 26 पे, और इनका होना बहुत ज़रूरी। हैदराबाद ने अगर बड़ा स्कोर करना है तो शर्जील का अच्छा खेलना ज़रूरी है। सलमान यहाँ से अब बनाए जा सकते हैं 175 180 पर जाया जा सकता है। 9 विकेट्स हाथ में हैं। शर्जील पूरी तरह से सेट हो चुके हैं विकेट के ऊपर, 26 गेंदें का सामना कर चुके हैं, 36 रन बना चुके हैं। अब बॉल नजर आ रहा होगा शर्जील को, मौका है हैदराबाद के पास।
और तो फिर जोरदार तरीके से हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं मिली शर्जील को। तो कोशिश करते रहेंगे वक्तन ब वक्तन बड़े शॉट्स खेलने की शर्जील। रिजवान महमूद बहुत उम्दा नौजवान बैटर हैं, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और इससे पहले भी तजर्बा रखते हैं T20 कॉम्पिटिशन्स में खेलने का। पिछले साल कप्तानी की हैदराबाद की, PSL में भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ रह चुके हैं और इस बार हैदराबाद नई आने वाली जो टीम है उसने इन्हें पिक किया है। दोनों हैदराबाद के कह लीजिए बैटिंग के मेन स्टेज हैं ये। इनकी पार्टनरशिप तोड़ना चाहेगी फाटा जल्द से जल्द। बहुत ही जबरदस्त शॉट, लेकिन आउट। कदमों का इस्तेमाल किया था, पुल शॉट मारना चाहते थे, थोड़ा लेट हो गए थे पुल शॉट मारने के लिए और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने खुशदिल शाह बड़ी आसानी से इस कैच को किया मुकम्मल। एक और धचका हैदराबाद को। पूछना पड़ेगा कि इस ओवर में इस शॉट को खेलने की ज़रूरत थी। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट गेंद है ये, कोई मसला नहीं, बिल्कुल बैट के बॉटम पे लगा ये और लगते साथ ही उन्हें पता था कि वो मुसीबत में है, क्योंकि खुशदिल शाह एक अच्छे फील्डर हैं और वो इस किस्म के कैचेस को जाने नहीं देते। 8 रन्स बनाए, 14 गेंदों का सामना किया और हैदराबाद 78 पे 2। सुलेमान खान नए आने वाले बैटर, इस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया है शर्जील खान को। सर्वर ने पहली विकेट हासिल की अपने पहले ही ओवर में। स्ट्राइक देते रहना चाहिए शर्जील खान को। सेट हैं और एक हार्ड हिटर बैट्समैन आपके पास मौजूद है, जस्ट सिंगल दें और शर्जील को अपना काम करने दें। ऑन साइड पर खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब। वैसे बस देखें तो 27 गेंदें खेली हैं शर्जील खान ने और 11वां ओवर है, तो थ्रू आउट स्ट्राइक काफी कम मिला है शर्जील खान को। देखिए अब तकरीबन आधे ओवर्स इन्होंने खेले हैं, 4 ओवर और 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं अगर आप गेंदों के हिसाब से देखें, क्योंकि 7 भी बैटर्स जो हैं 2 आए हैं और 2 आउट हो चुके हैं। ये विकेट का मंजर जो गिरी रिजवान महमूद की, इस बार कट किया है और गैप में खेले, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा। शर्जील को इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी विकेट जो है वो कितनी ज़रूरी है, कितना उनका खेलना ज़रूरी है आखिर तक, और शायद वो पहले की तरह खुला नहीं खेल रहे। जब भी बाउंड्री लगाते हैं उसके बाद सिंगल करते हैं और फिर जब उनके सामने विकेट्स गिरती हैं तो उनकी फ्लो कह लीजिए कि वो ख़राब होती है। तो ये सामने वाले बैटर्स को भी चाहिए कि उनका साथ दें ताकि वो खुल के अपनी गेम खेल सकें। और इसी के साथ 11 ओवर हुए इख्तिताम पजीर। हैदराबाद 80 पर 2, 81 पर 2।
कदमों का इस्तेमाल पहली ही गेंद पर, लेकिन बुरी तरह बीट हुए। खुबैब ने थ्रू आउट बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। एक बार फिर आते साथ ही बड़ा रिस्क लिया है और सामने सेट बैटर जो हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तीसरा गेंद था सुलेमान का और बड़ी हिट लगाने की कोशिश, जबकि शर्जील सामने सेट खड़े हैं और खुद से टाइम लें। वो इन है, इस पिच पे वक्त गुजार चुके हैं, स्ट्रोक लगा चुके हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है। जैसे कहते हैं क्रिकेट माइंड में खेली जाती है। शॉट्स तो आप खेलते ही हैं ग्राउंड में, लेकिन एक मेंटल लेवल भी आपका होता है कि आपको किस वक्त में क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उसका फुकदान दिखाई दे रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। एक बैटर आपके पास मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, और एक वक्त था कि दुनिया के बड़ा सा बड़ा बॉलर शर्जील खान को बॉल करने से डरता था, तो वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ज़्यादा हमने देखा है कि खड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल की भी इनकी कोचिंग होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, कब रिस्क लेना है, कब इनिंग्स बिल्डअप करनी है। उस पर काफ़ी मेहनत दरकार है हैदराबाद को। वाइट बॉल का एक स्कोर मिल जाएगा यहाँ पर। एक्सम से काफ़ी बाहर था, स्विंग किया था शर्जील ने, अगर कनेक्ट कर पाते तो एक बाउंड्री मिलती यहाँ पर। उठा दिया है लॉन्ग ऑफ के जानिब, लेकिन नहीं, कैच होना चाहिए था। काफी टाइम मिल गया था, आफाक अफरीदी वहां मौजूद थे, इससे बेहतर एफर्ट हो सकती थी। ये शर्जील सबसे बड़ी विकेट थी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी निशानदेही की आपने कि ये बड़ी विकेट थी, मेन प्लेयर है, सेट प्लेयर है, और एफर्ट ही नहीं की उन्होंने, इस कैच तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। यंग बॉलर है, उन्होंने ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया, जूनियर है, लेकिन इस बॉल पे जाना बनता था आफाक का। इस मरतबा बेहतरीन खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। सर्कल के अंदर थे फाइन लेग के फील्डर, ऑन साइड पर गिरी हुई बॉल और 4 रन के लिए खेल दिया सुलेमान ने। तो पहली मरतबा हमने देखा है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गए हैं सलमान, ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं की, आराम से जस्ट प्लेस किया और बॉल को भेज दिया 4 रन के लिए। बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग, बेहतरीन। हैदराबाद पहुंच चुके 88 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 8 ओवर का खेल बाकी। एक मरतबा फिर लेग स्टंप पे बॉल, और एक मरतबा फिर बॉल जाएगा बड़ा ही फाइन 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज इस वक्त। खराब बॉलिंग खुबैब की जानिब से। जी हाँ, दाएं हाथ के बैट्समैन खेलते हैं तो टांग पे बॉलिंग, बाएं हाथ के बैट्समैन खेलते हैं तो टांग पे बॉलिंग। सो बेसिकली ये बुनियादी तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और लाइन लेंथ जो है ये बहुत ज़रूरी, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर हैं, और खसूसन इस फॉर्मेट के अंदर जब आपके अक्सर थर्ड और फाइन लेग ऊपर होती है, तो फिर आपको बहुत नपीतुली बॉलिंग करनी है। ऐसे में अगर आप आसान रन्स देंगे तो आपकी टीम पे प्रेशर आएगा। 92 पे 2 हैदराबाद, और अभी कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया इस ओवर में, और 2 बाउंड्रीज मिल चुकी हैं। बेहतरीन गेंद मिडल ऑफ में जिस पर बीट हुए। 12 ओवर के इख्तिताम पर हैदराबाद 92 पर 2। क्या नाम है जी?
जी रिजवान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। हमें बताइएगा इस पिच को देखते हुए क्या टारगेट आपके जहन में है? आज शर्जील बहुत डिफरेंटली अप्रोच कर रहे हैं, बहुत स्ट्राइक करने के बाद सिंगल ले रहे हैं। क्या ये प्लान का हिस्सा है या दूसरी तरफ से विकेट्स गिरेंगे हैं, इस वजह से थोड़ा इन्हें सीधा खेलना पड़ रहा है? शर्जील जो है शर्जील जो है वो जो है कंटिन्यू करें पूरा 20 ओवर्स तक। और हमारा प्लान जो है शर्जील के साथ 20 ओवर्स तक का था, और दूसरे एंड से जो है हमें कंटिन्यू करना था स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए प्लान को प्रॉपर तरीके से। जो हमें 10 ओवर में हमने डॉट बॉल्स काफ़ी ज़्यादा खेली हैं, कोशिश करेंगे कि उसको ओवरकम करें, और इंशाल्लाह जो हमने रीज़नेबल अपना टोटल रखा है 160 और 170 प्लस, वो इंशाल्लाह अचीव करने जाएं। अच्छा रिजवान, आप भी बैटर रहे हैं अपने करियर में। आपने शायद नोटिस किया होगा कि ओपनिंग बैटर्स बाशमूल हैदराबाद के बैटर्स बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल बड़ा ही लिमिटेड है। तो इसके लिए क्या आप इनको अपने प्लेयर्स को सजेस्ट करते हैं? क्योंकि अगर इन्होंने ओपनिंग करनी है तो फिर इस मतलब फीट मूवमेंट के साथ तो ये बड़ी क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। एग्जैक्टली फीट मूवमेंट तो किसी भी किस्म के फॉर्मेट आप क्रिकेट खेलें तो बैटिंग के अंदर फीट मूवमेंट इज़ नेसेसरी पार्ट। और स्पेशली जब आप इस तरह के T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे आपका इंटेंट जो है वो शो करता है कि आप किस अप्रोच के साथ बैटिंग करने जा रहे हैं, और उस इंटेंट के अंदर, उस अप्रोच के अंदर फीट मूवमेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो वो ऑब्वियसली अब ये लर्निंग प्रोसेस में है। हमारे पास ये 3 बच्चे अंडर 21 खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, जिसमें से एक ओपनर वैद रावपोटो जो भी खेल रहे थे, जिन्होंने मतलब अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वैसे माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो ही इज़ इन स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस। तो इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अल्लाह ने चाहत के इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। फाक अफरीदी इस गेंद के नीचे आ चुके थे, लेकिन इसको सही तरीके से जज नहीं कर सके, और एक बड़ी विकेट जो हो सकती थी वो 4 रन्स में तब्दील हो गई। तो बॉलर क्या करें, किस्मत को दोष देंगे और क्या करेंगे? आफाक अफरीदी ने पहले एक कैच पे कोशिश नहीं की, और इस बार जो एक आसान कैच था सरवर अफरीदी का, वो छूट गया है उनकी गेंद पे। अच्छा रिजवान, गेम अवेयरनेस के बारे में प्लेयर्स से कैसे आप मतलब क्या उसकी कोई ड्रिल है, किस तरह आप मैनेज करते हैं कि इनकी गेम अवेयरनेस में तब्दीली आए? क्योंकि देखिए सामने सेट बैट्समैन खड़ा है, पहले आए इन्होंने एक निकल के हिट मारी, अभी फिर इन्होंने बड़ी हिट मारने की कोशिश की। सिंगल करके मेन प्लेयर को नहीं खिला रहे, जो सेट खड़े हैं, जो बड़े हिट लगा रहे हैं खुद से। इससे पिछले वाले ने भी यही किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। हालांकि यहाँ से जो है मैसेज ड्यूरिंग द मैच भी उनको भिजवाया गया है, और उससे पहले भी जो है उनको प्लान छोटे छोटे बताए थे 5-5 ओवर्स के, कि भाई हमने पार्टनरशिप बिल्ड करके खेलनी है। और उनको हर 5 ओवर का प्लान ये दिया हुआ है कि भाई 5 ओवर में आपने इन 5 ओवर में इस तरीके से एक्सेलरेट करना है, इस तरह कंसोलिडेटेड इनिंग खेलनी है, देन आफ्टर दैट जो है फिनिशिंग टच देना है। बट मे बी इस लिटिल बिट ऑफ माइंडसेट के उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत वो उस तरीके से अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनको माइंड प्लान यही दिया हुआ है कि आपने जो है शर्जील को एक एंड से खिलाना है, और जो आपको ऑड बॉल मिले आप उसके ऊपर बाउंड्रीज अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा आखिर में अपनी बॉलिंग के बारे में बताइएगा, क्योंकि पिछला मैच जो था उसमें काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की और जिसका फिर खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। शॉर्ट बॉल को अच्छा खेल रहे थे अकरम, तो इस बार क्या डिफरेंट होगा प्लान में? जी लास्ट मैच में जो हमारे बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल्स की, जिसकी वजह से मैच जो है काफ़ी हद तक वन साइडेड हो गया था। तो अभी उनको एक प्लान दिया है कि भाई आपने अपने एरियाज़ में चैनल बॉलिंग करनी है और बैक ऑफ द लेंथ स्टम्प्स टू स्टम्प्स बॉलिंग करनी है। इंशाल्लाह उसको अप्रोच करेंगे हमारे बॉलर्स। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा डिफरेंट बॉलिंग नज़र आएगी, और हमारे पास स्पिनर्स भी ऐड हैं टीम के अंदर, तो इंशाल्लाह दे विल डू द डिफरेंट रोल इन दिस मैच। लास्ट में हैदराबाद में लोकल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट या फैसिलिटीज़ और जो यूथ में टैलेंट है उसके बारे में कुछ बताइए हमें सुनने वालों को, कि हैदराबाद में क्या हालात हैं और आगे क्या देखते हैं। अब तो हैदराबाद की फ्रेंचाइज भी आ गई है और उम्मीद है कि वो हैदराबाद क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ करेंगे वहाँ पर।
बिल्कुल एक वैरायटी ऑफ टैलेंट है हैदराबाद में बैट्समैनों का, स्पिन डिपार्टमेंट का। ओनली वी आर लैकिंग एट द मोमेंट इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं अपनी, और इंशाल्लाह हम फास्ट बॉलर भी प्रोड्यूस करेंगे। बट द फैसिलिटीज़ इन हैदराबाद ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ी सी हमें जो है इधर लैक करते हैं हम। यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हमारी फैसिलिटीज़ थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएँ, और मैं इस बात पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि डायरेक्टर डोमेस्टिक जो है वो विज़िट करने के लिए आए थे हैदराबाद में न्याज स्टेडियम में, और उन्होंने जो है उनके साथ डिस्कशन किया है। एंड होपफुली इन फ्यूचर हमारे पास न्याज स्टेडियम जो है वो एज ए हब जो है वो आ जाएगा। और अब चूँकि किंग्समैन ने भी जो है वो हैदराबाद की टीम ली है, तो होपफुली कि आपको जो है बहुत ज़्यादा और टैलेंट देखने को मिलेगा। और अभी लोकल बॉयज़ जो हैदराबाद के हैं वो भी किंग्समैन का पार्ट हैं, तो होपफुली दे विल डू बेटर। और जहाँ तक बैटिंग की बात की जाए तो हमारी बैटिंग जो है वो 4 डे फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इनको जो है T20 फॉर्मेट के अंदर वर्किंग करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट। और अल्लाह ने चाहा तो आपको इन फ्यूचर जो है अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपको, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। अल्लाह करे कि हैदराबाद में फैसिलिटीज़ भी आएँ और वहाँ के बच्चों को भरपूर मौके मिलें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जो एक हम तशवीश एक जाहिर कर रहे थे कि आज गैर रवायती क्रिकेट खेली है शर्जील खान ने, तो उसका जो है निशानदेही कर दी है उनके कोच ने कि उनका प्लान ये है कि शर्जील जो है वो आखिर तक खेलें, 20 ओवर खेलें। हल्का सा लेग स्टंप पे पिच हुआ और ऊंचा भी था काफ़ी, जिसका पूरा बेनिफिट दिया शर्जील खान को। तो जो गेम प्लान है आज डिफरेंट है। कोचेस की जानिब से बताया गया है कि हमारा प्लान ये था आज इस गेम को लेके चलने का कि शर्जील खान एंड तक बैटिंग करे। तो यही वजह है कि आज काफ़ी गैर रवायती क्रिकेट खेली है शर्जील खान ने। एज लगा है और बॉल जाएगा 4 रन के लिए, और इसी के साथ शर्जील खान ने अपने 50 रन किए मुकम्मल। इन 4 स्कोर के इजाफे के बाद स्कोर 111, 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये बहुत उम्दा बारी है और इसकी ज़रूरत थी शर्जील को भी, और उसी के साथ साथ इस टीम को बड़ी अशद ज़रूरत थी कि एक बैट्समैन पूरी इनिंग खेले। और अब ये इस पोजीशन में है कि यहाँ से लॉन्च भी कर सकते हैं अगर सामने वाले थोड़ी मेहरबानी करें और शर्जील का साथ दें, बजाय कि खुद से वो बड़े हिट लगाने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि अपने सीनियर प्रो को जो है वो फैसिलिटेट करें, सिंगल्स करें, अंदर रहें, जब गेंद मिले तो ज़रूर मारें, लेकिन खुद से मार के अपनी विकेट ना गंवाएं, क्योंकि उससे प्रेशर शर्जील पे आएगा। ब्राइट मारना चाहते थे आखिरी बॉल पर, लेकिन बीट हुए। 14 ओवर्स के इख्तिताम पर हैदराबाद 111, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ABS developer National T20 Qualifiers 2025 and 2026। 6 ओवर्स का गेम बाकी है और कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छी कट, जबरदस्त 4 रन सलमान के। तो अब जिम्मेदारी का एहसास होने लग गया है दूसरी जानिब से भी। इसका जिक्र इसे पिछले ओवर में हमने किया था कि अब दोनों जानिब से रन्स बनने चाहिए। अगर रन्स नहीं भी बन रहे तो अब सिंगल लें, शर्जील को आगे करें। तो इसी दौरान बहुत ही खूबसूरत शॉट सलमान की 4 रन के लिए। अच्छी कट थी, मौका था यहां पर, लेकिन बॉल की रफ्तार इतनी तेज थी कि रिएक्शन करने का भी टाइम नहीं मिला और बॉल उनके ऊपर से गुजर गई, शॉट थर्ड मैन के फील्डर के। पहली बॉल पर बाउंड्री। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बाकी ओवर है ये भी बेहतर रहेगा हैदराबाद के लिए।
लक्ष्य से बाहर बॉल, फ्रीक्वेंटली वाइड बॉल्स किए हैं आज फाटा रीजन ने। लाइन और लेंथ पर काफ़ी जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। जब मिडल ऑफ में अच्छी बॉलिंग हो रही है, राइट एरियाज में बैट्समैन वक्तन ब वक्तन उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन फिर एक वाइड बॉल, फिर एक एक्स्ट्रा रन, आपको री बॉल करना होता है उसके बाद। सिंगल लेने की कोशिश, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी काफी आगे खड़े थे। शर्जील की बहुत ही शानदार बारी और जरूरत थी हैदराबाद को, शर्जील को भी, कि अपना एतमाद बहाल करने की। इस इनिंग से काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा शर्जील को। अच्छी गेंद, शायद पेस का इस्तेमाल करना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड के बीच से खेलना चाहते थे, लेकिन कैप में नहीं खेल सके, वो टाइमिंग भी नहीं मिली। सुलेमान 21 पे पहुंच गए हैं 15 गेंदों में। अच्छी पार्टनरशिप ये डेवलप हो रही है, और अगर ये दोनों 3 से 4 ओवर और खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में ले जा सकते हैं हैदराबाद को। यहाँ विकेट नहीं गिरनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी इनके लिए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइमिंग नहीं मिली, गेंद खासा पीछे खींच लिया बॉलर ने, लेंथ को तब्दील किया बैटर के बाहर निकलते हुए देखकर, और एक रन। शर्जील खान आए सामने, और अब शर्जील सेट है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हैदराबाद के लिए देखना कि शर्जील अगले 3 ओवर्स में क्या करते हैं। ये इस इनिंग का मेक और ब्रेक हो सकता है। देखिए, पहले पे 4 रन हासिल किए, फिर वाइड बॉल आई, उसके बाद ये दो डॉट बॉल्स ये बनते नहीं थे इस मौके पर। बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही क्लेवर क्रिकेट बाय शर्जील खान। हल्का सा पीछे हटे, बॉलर ने मिडल ऑफ में बॉल किया और जस्ट उन्होंने गाइड किया टुवर्ड्स थर्ड मैन बाउंड्री और 4 रन हासिल किए। जी हाँ, बहुत ही जहानत के साथ बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त शर्जील। रूम बनाया, और अब उनको देखते ही बॉलर ने थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा, और उन्होंने पेस का इस्तेमाल किया, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल दिया। बहुत ही उम्दा बैटिंग शर्जील की। और बोल्ड कर दिया आखिरी बॉल पर, जाते जाते रिवेंज ले लिया यहां पर सर्वर ने। बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी कामयाबी। 15 ओवर के इख्तिताम पर 121 शर्जील हो गए हैं आउट, और आखिर में जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे फाटा के लिए, बिलाखिर सर्वर ने आखिरी बॉल किया। शर्जील खान ने उसी तरह रूम बनाया, शॉट मारना चाहते थे लेकिन इस मरतबा मिस कर गए, और फेयर डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं फ्रंट फुट में, सिमिलर डिलीवरी थी लेकिन इस मरतबा मिस कर गए शर्जील खान। 56 रन की बारी खेली, 3 छक्के 7 चौके, हैदराबाद 121 पर 3। A big blow for Hyderabad. 121 for 3. Shajil was playing a brilliant innings. And just when Hyderabad required to accelerate through Shajil, server got the wicket. And from here onwards, FATA can make sure that they can put some tight rings around the runs that Hyderabad will be looking to score. Absolutely. And quickly you see their fast bowler coming back since Shajil is gone. He was really hard on the fast bowlers.
But now the eyes for Hyderabad will be on Suleiman. The way he's batted so far, it was under the shadow of Shajil who got out. The ball probably keeping a little low than his expectations. Wanted to go hard, really hard. Look at those eyes. Just gave himself room, and in the end, a bit of a nothing shot after giving himself room by Shajil Khan. He lost his wicket. So it's up to Daniel and Suleiman now. If they can add another 60 runs, maybe get the total to 180, that would be handy. Off the hips. Should be looking for the second one. It's not there. Yeah, something between 160 and 170 was mentioned by the skipper at the toss. But they'll have to do some hard work. They've got their work cut out. Suleiman and Daniel just need to focus on not having those dot balls. Suleiman can hit big. But it's not going to be easy because the fast bowlers are back and they're decent in death overs. Straight away into the stumps, giving no room to Suleiman to work with. I thought it was very close. Maybe the impact outside the off stump. Maybe. Matlab, I really can't say. Height, I don't know. The only thing I thought was of the impact, but Marina Iqbal, that was closer than we all think here in the commentary box. Maybe Suleiman is a lucky man, he's given it runs. That's good line. Good length as well. He's got some decent pace, Siraj. They'll have to think something out of the box, Suleiman and Daniel. Singles are not going to hurt FATA and will not help Hyderabad as well. They have to at least score one boundary in every over. Right now it's 4 singles, 2 more to go. Mid-off is inside the circle. We've got 2 men patrolling towards the leg. Ramp and bowled into the stumps. That has been the success story for Sirajuddin. Another one down for Hyderabad. Yeah, that's not a smart piece of batting from Suleiman. He's so good in front of him. Why would you do that? And was there an extra need of this? No worries here at this end. But look at this. The ball did a little bit, came in, and he just missed the line completely. Probably he'll have to revisit the choice of shot that he attempted. 24. He scored 125 for 4. Akbar Khan walks out. 4 down on 125. Hyderabad is in a bit of trouble. Sirajuddin just giving away 4 singles, picked up a wicket. That's a good delivery, just outside off stump, shaping away. Dot to end the over. 125 for 4. Hyderabad opted to bat first. They're struggling. They wanted to post something beyond 160. But it was always going to be a challenge against FATA. Server already picked 2. Big one of Shajil as well.
singles are not going to help Hyderabad. It's not easy to play server because he's not that express. He bowls that nagging length, so you as a batter have to think of shots and areas where you can target. You just can't stand there and play. And also he's not tall and he's got a little bit of sling in his action too. So expect the ball to be in that low trajectory. And it's very hard to get under it then if the ball is in that lower side of the trajectories. Yeah, that's a wide. I always thought, every time I see Sarwar Afridi, I see that he had the potential to be a very good all-round cricketer because the way he hits it, he's a very strong lad. He hits them big, he hits them long. He's a more than handy bowler. Pitched up, went for the shot and all the way for 6. Okay, no, he's not a more than handy bowler. Just kidding, it was just pitched up. Well dealt with. Akbar looks good, facing his second delivery and just smashed it for 6. That's a huge hit. Great pace, great balance, great swing off the bat. That's how you get success. Everything in order. And again, field up, over his head for 6. For a second we all thought that the fielder might be in business, but that just went over his head. Business is what Akbar means. And he came out of nowhere and started slamming Sarwar. Forced to change his length on that occasion. The previous one was pitched up. Just teasing the fielder at the fence. 2 big blows. This is exactly what Hyderabad needed. Absolutely, that's a glamorous start. 3 balls, 2 sixes. Akbar, if he stays on, probably this is a type of inning that Hyderabad were looking for. Oh, they're trying to play behind square. Fielder gets underneath and totally misjudged it. He's not happy, Sarwar. You expect a better effort from FATA fielders. Wasim Khan. Chances like this can make you look a very funny man. He's in the air for a long time. Have a look at him. Just has his eyes on him. Then, lost his. Oh no, where did it go? It's never easy, we know that. This one also in the air. Fielder will only see it sail over his head for 6. Even he was looking to just survive at that point. Khushdil Shah, the fielder. All I can say is we stand corrected. Because we thought it's not easy to hit Sarwar, but Akbar is showing us how it's done. Again, just little predictable, outside off, that length, allowing Akbar to free his arms. Deep in the crease. That is smart batting. He's got protection there. But he will keep the strike. A big over for Hyderabad. 147 for 4. Exactly the over Hyderabad needed was Sarwar's previous one. Akbar with big blows. Massive 6s. Sirajuddin now. He's waiting for the ball to come at that length. Easily tackled, just helping on its way. He was straining down the ground. It's all happening for him. He's bossing the game at the moment. Anything that is there in his zone, this one top edging it
onto his helmet and then towards the boundary line for 4. And I'm pretty much sure that the protocols, concussion protocols, will be followed. Every time the ball hits you any part above shoulder, the physio will check your concussion test. Meanwhile, let's have a look at the people who've been brilliant, who've supported domestic cricket. ABS Developers, world's first Sharia compliant real estate company. Oh, deep in the crease. And it will go a couple of bounces over the fence. Not sure if that length is working because haven't seen any change in pace or the Yorkers that are must required at this stage of the game. Okay, just throwing the bat at it and it's working for him. Went a long way in the air and away from Khushdil Shah. You just can tell Khushdil Shah the way he runs. And again, same result, same area, same intent, same ball up. And someone will have to have a word with the Farc. This length is not working. They're up and ready, swinging hard at anything. And this length will only allow Akbar to free his arms. Have a look. Just a hop, going down the leg, was ready. I have to feel unlucky, but again, this is not the correct line or length to bowl in death overs. No change in pace, no Yorkers. 160 already, that's exactly what Hyderabad were looking. And at one stage, we thought that they might struggle to get to 150, but courtesy to Akbar, 33 of just 9, and still going. Again, deep in the crease, the helicopter shot comes in, and will land safely. Pushing for the second one. He's got some talent. And he's got some luck on his side too. Akbar, everything he's touching is turning into silver these days. Because they've been edges flying over the head of the fielders. This one also, he wanted to just flick it, top edged it, and it landed safely. So it's all good for Akbar at the moment. He's entertained us with this glamorous batting, I tell you. 35 of 10 deliveries. Oh, picked up beautifully, innovative and effective. Goes all over the boundary for 6. What a superb innings he's playing. Surely that is a high-class inning. Something that Hyderabad really wanted from a young player other than Shajil Khan, somebody stepping up, giving those finishing touches to the inning. Shajil started it, Akbar finishing it. No, he's not going to get the fastest 50 of the tournament. That came off 13 deliveries in the previous game. 18 gone, 169 for 4. He will keep the strike. A masterclass from Akbar. 42 of just 12 deliveries. He's given some jolts to the fast bowlers of FATA. Wide, looking for the wide Yorkers. We'll have to bowl that again. But what a talent. Mindset. He's not afraid. He doesn't care who's bowling at him. He's using the crease really well, and that's exactly what we've been talking about. It's important for you to think outside of the box as a batter, to do something different. And you can tell it's a win for the batter when the bowler like Siraj starts bowling away from him, outside the off stump.
Swing and a miss. Change in pace from Siraj. That's what he's suggesting. But the intent is clear in his mind that he's going to go after everything. What a fantastic cameo this has been from Akbar. Have a look at this again. Into the surface, slower in pace. A cutter maybe. Yeah, didn't pick that slow one out. Good bowling. Fuller into the slot. Brings Daniel now on strike. A bit of relief for FATA, I would say. Absolutely. They're tasting the taste of their own medicine. This is what they used to do to the teams. Shajil Shah, he did it in the first game. Played a massive knock, and now for the first time they're under a bit of pressure. Feeling the heat. FATA 171. Now trying to slam it. Again, a length ball. Confusion in the middle. Daniel was in the crease. And it will definitely be no worries for Hyderabad because Daniel, Akbar both are safe. And more importantly, Akbar is back on strike. Tell you, it's a very smart work from Daniel. He saved both of them, himself and Akbar. He stayed in the crease until the ball hit the stumps. Have a look at this, what happened. He was beaten. Again, change in pace, a slower one. Akbar wanted the strike so bad that he kept on running. He waited enough the ball to hit the stumps and then change the direction, and then Akbar can get to it. Again, superb batting, sensational. That is a high-class inning from Akbar. He moves to 49 of just 14 deliveries. This may turn out to be a match-winning inning for him. Where has he been hiding? Have a look at that. Again, very cheeky. He's making Siraj look pretty ordinary. It's important to get in position early on and keeping his head steady, eyes on the ball, and just a flick of the wrist. Oh, that is some batting. 49 of just 15. Changed the complexion of the game entirely for Hyderabad and even for FATA. Look at that. Worry. This surely is a match-winning inning. You just know it. The momentum. Brilliant. Brilliant half-century from Akbar. Third fastest in the history of Pakistan domestic cricket. Surpassing so many greats. And he's in that list of the greats with Imran Nazir. Mohammad Akram topping that list, and he's at number 3 now after two of those big hitters. That is some batting, serious talent. No worries. The moment he came in, absorbed the pressure, backed himself and delivered for himself and his team. Goes hard. It's got the distance, yes? No. The fielder is coming underneath and has been dismissed. Sameen with the catch. Sirajuddin finally getting his revenge. But he did his work. Akbar with a brilliant knock of 51 off just 16 deliveries. Superb. Just gave those finishing touches to the team. Great effort in the end from Shajil, and now by Akbar. He had no choice but to go big. He was successful in the previous few occasions, not to be at this time. But nevertheless, this is a brilliant inning, a high-class entertainment from Akbar Khan, scoring 1 runs as Hyderabad lose their 5th with 180 on board. Well, Hyderabad, what they were looking for, Akbar provided, and in some serious way. Looked FATA's bowling pretty ordinary. Wild swing just outside off stump, going with the angle. Last 5 legal deliveries. They wanted something around 160, 170. They are already on 180.
And these runs are going to hurt FATA. Yeah, surely when Shajil lost his wicket, we thought that they will struggle to get to 150, 160. But what a time to stand up for your team. Oh, nicely played. Brilliant batting. Up and over. Controlled shot from Danial. Another 4. Yeah, good shot. Great placement. Angling the bat. Waited enough and then angled it deliberately over the head of the fielder for 4. It's good batting. Taking the score to 185. 84 rather. They have to rethink about the length they're bowling at. Slow one, shuffling across, knew exactly where the fielder is, and he's carrying on what Akbar started. Brilliant batting from Danial now. Yeah, they've just frustrated the bowlers of FATA. You said the previous delivery maybe looked to change the length. He bowled up to it, he had an answer to it. When it's not working, it's just not working. Wherever you bowl, this is what happened. And that's the wicket loss of Akbar Khan. Was in the air for a long, long time. Sameen Gol made a good ground. Experience of him. Yeah, single for Danial. 189 now for the loss of 5 wickets. That's a very good score. 2 more deliveries to go. 9 already off this over. Yeah, fast bowlers, you would expect again to bowl within the stumps. The batters at this stage will go hard. They will swing hard. Any width either side of the wicket, any freedom to free the arms, you will be punished. We saw whenever the FATA bowlers kept the line within the stumps, at times Yorkers, it was difficult to hit them out. Again, length ball, giving the invitation to go big, and he does. This is poor bowling from Afaq. And I loved how Zan stood tall there. A bit of a swag about him. He knew that he's middled it. But let's see if it has gone all the way. But yes, as you mentioned, not a great length to be bowling in those last few deliveries. So that's gone all the way. That's clearly over the ropes. Should have trusted the players. It's Ramadan. Should have trusted him. At least today. Last delivery of the inning. Swings, misses. 1 run. Maybe look to get another one. Yes, they do. That's poor. Very poor from FATA. Just giving away so many easy runs in the end. And brilliant on the part of Hyderabad as they finish at 197 for the loss of 5 wickets. Second highest total of this tournament, posted by Hyderabad, who was struggling at some point. It was 125 for 4, 197 for 5, courtesy to some brilliant batting from Akbar. And then Danial, well, they have definitely given some worry, not some, I would say, some serious reflection to be done from FATA in terms of bowling in depth. And now how will they go to chase 197? Really good batting, really good comeback from Hyderabad. Yeah, somebody who stole the show with his fancy, glamorous batting was Akbar Khan. He's here with us. Let's have a talk with him that what he is thinking about this inning. Akbar, सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो, बहुत शानदार इनिंग रही. कहाँ छुपे बैठे थे अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी इनिंग खेला. कहीं नहीं छुपा था, बस आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन में जगह नहीं बन रही थी और जो टीम के लिए बेहतर था बस उस पर रहा. आपको मालूम है कि आप बहुत करीब आ गए थे पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन 50 बनाने के. अब आप तीसरे नंबर पे. इमरान नज़ीर
के बाद? ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है अगर मैं तीसरे नंबर पे हूँ तो। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया है कि आपकी इस इनिंग तीसरी फास्टेस्ट है पाकिस्तान की, और क्या शानदार खेले। क्या माइंडसेट था, क्या प्लान था? सिंपल अपनी स्ट्रेंथ पे रहे आप? नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ही हूँ क्योंकि कोच और कप्तान का यही था कि आखिर में 4 ही ओवर हैं और आपने अपना नेचुरली खेलना है और ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरीके से खेलता हूँ। अकबर, आसान नहीं होता। जिस पोजीशन पे आप आए उस टाइम पे लग रहा था कि शायद हैदराबाद थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। जितनी क्लैरिटी से आपने हिटिंग की है, माइंडसेट को आप एडवांटेज देते हैं या इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है कि आप अपने आप को बैक करते हैं? बिल्कुल, ज़रूर, हर चीज़ की प्रैक्टिस ही होती है। मैंने ऐसी बहुत प्रैक्टिस की थी, शुरू के नए बॉलों से भी बहुत प्रैक्टिस की है और आखिरी पुरानी बॉलों में बहुत प्रैक्टिस की है। तो मेरा बस यही माइंडसेट था कि थोड़ा-सा अपनी टीम से प्रेशर हटाऊँ और जैसा मेरा नेचर है उस तरीके क्रिकेट खेलूँ। बड़ी हिटिंग के अलावा और क्या-क्या कर लेते हैं आप? सुना है विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं जी, अच्छी? बिल्कुल, मैं बेसिकली विकेट कीपर ही हूँ। क्योंकि ये पहली बार है जब हम देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपको इस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हुए। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो Thank मच। you थैंक very यू। much, थैंक यू सो मच। Akbar Khan. That was brilliant inning from him. Shajil Khan started it. He finished it. Let's have a look at the highlights. And in the highlight was Shajil Khan's batting. The way he just dealt with the bowling of FATA. Some quality shots. Then his partner went Roho Poto, but he continued on the other side, playing some big hits, some massive hits. Yeah, you know, once he's in, he's settled in, he will take you apart. Some support was provided from the other end, but kept on losing partners. But Shajil, he was in a different mode, brought up his 50 in style. And then Sarwar Afridi was the one to get rid of him. The show didn't stop. Akbar came in and he straight away started the onslaught. He completed his 50. And some brilliant batting, some big blows, some innovation. And that's how his inning ended, with Samin taking the catch. 197 posted by Hyderabad. Yeah, that's how the scorecard looks like. Two men right at the start and in the end, where it matters. They've contributed 56 of 38 from Shajil, 51 of 17 by Akbar, giving the momentum back to Hyderabad region. Few cameos in the middle by Suleiman and Ubaidullah to take the score to 197 for the loss of 5 wickets in the 20 overs. 127 runs came of the last 10 overs, remember. So imagine how those finishing touches from Akbar has helped the team get to 197. Yeah, FATA's bowling was tested and challenged by Shajil first on, and then Akbar. 2 wickets for Sirajuddin, 2 for Sarwar and 1 for Asif. You can see the economy, they were a little expensive and were taken apart by Hyderabad batters. Right, time for a break. It's an extended one. We're gonna come back at 6:30. So see you then with the run chase.
Welcome back to Qaddafi Stadium, where ABS Developers National T20 Qualifiers is undergoing. It's match 15, where FATA has taken on Hyderabad. Beautiful evening here under the lights. It's a gorgeous view of Qaddafi Stadium, as always. Hyderabad, well, they opted to bat first. Had some troubles early on, were 4 down on 125, but brilliant comeback. They posted 198. FATA will have to have a good approach from ball 1, 9.90 runs per over under lights. As expected, Shajil Khan started off really well, but the innings that actually put Hyderabad back on the map was Akbar. 51 of just 17 deliveries. Now then, the umpires, Emmanuel Aslam and Muhammad Asif, are making their way out in the middle for the run chase. You all had a good start. So did we. I've got my colleague with a cup of tea in his hand. Ali, how do you see this run chase for FATA? Yeah, I don't see it much clearly at the moment because of the charges we had. It's a little hazy at the moment in my head, but yes, great work from these men. Hyderabad, some final words, some final important words from the captain. Pep talk that what needs to be done. What's done is done in the first inning. They have to play good cricket in the second inning also to win the game. Probably these are the final words from the captain, the words of motivation, because they know that they're up against opposition who have that never give up approach, always these boys from FATA. And how often have we seen that the team who ends well in the first inning carries on that momentum, and right now the momentum is with Hyderabad, but they have posted a decent total 2 challenge FATA's batting lineup. It will be important how both the teams starts with the power play. Mohammad Naim on the right, we know what he's capable of. For the liking of FATA, they would want him to give them a good start, a flyer, just like Hyderabad Shajil did, and then the finishing touches may be coming from Khushdil Shah. So they've got lots of talent, lots of batting depth. Sarwar Afridi also plays at number 6. It's all about having a good start. But a lot of Hyderabad's hopes will rely on Hasnain, how he bowls in the power play, especially if he can get a couple of early wickets. I think they're in with a real good chance. Yeah, he was very expensive the other day against Dera Murad Jamali. He bowled a lot of short length deliveries and was punished. I hope that he has learned from the previous experience, because FATA batters, they will not spare him. They all are up and ready to go and chase it. Mohammad Farooq will open the batting with Mohammad Naim. Both are a bit of explosive batters. Slip in place for Hyderabad to start off. He must be hurt from the onslaught from the youngster from the previous game, Mohammad Hasnain. Mohammad Akram, he took them for cleaners, in fact for dry cleaners. He scored the fastest half century. Right, all in readiness to start this run chase. I guess now it is. Oh, beautiful delivery. Exaggerated swing from Hasnain. Did surprise Farooq and also us. Fantastic. What did he has for iftar? Some extra brains. Look at this, a floater right up there and swing. Great way to start. That's a good sign for Hyderabad. Yeah, all he just need to do is be consistent in that channel. He's getting the movement. He's got a slip in place. Just again and again keep on hitting on that length. Oh, a little bit of width given. And Farooq has welcomed Hasnain with a boundary. Yeah, it was there in the slot.
big smile on Farouk's face because he knows that he's got it right. Not ideally timed, but still enough to get it over the head of the fielder and a boundary, because there's so much space to play with of Hasnain that if you're able to get the bat on it, the ball will just fly towards the boundary. Yeah, I don't mind the length. It's just the line that he needs to adjust a little bit. On that occasion, just giving the freedom to Farouk to open his hands. Oh, again, a lot of bottom hand coming into play. Fielder just evades it. He's taking risks. Noman Ali tried his best. Absolutely. Maybe 5 years earlier, he would have grabbed it. Still a good effort. He ran backwards. Have a look at this. He had his eyes on it. Just over. Yeah, it was much better line and length, a tighter line that didn't give Farouk a lot of freedom. That's what you can expect from FATA. They will attack you from ball one. Naim now on strike. Once he gets going, it's fireworks all over, so Hyderabad will have to take him out of equation quickly. Deep in the crease, trying to flick it. Not a convincing shot. The first delivery he's facing, the ball is swinging away from him. Yeah, that's how he plays. He doesn't care. This one probably with the angle onto his pads. That will probably wake him up. It's a wake-up call maybe. But he's a really talented, hard hitter opener, Naim. Yeah, made his mark in the PSL for Lahore Qalandars. Management spoke highly of him, gave him a lot of chances, and finally he showed the world what he was capable of. Oh, another good delivery, inviting Naim for that drive. This is much better looking, Hasnain. A lot better. Not scared to ball it up to the batter. He wants him to drive. And he did. The bat closing while he was just attempting that shot. I'm not sure if that's the right way to go. While driving the ball, closing the bat. Marina Iqbal. Yeah, his bottom hand, he's always bottom hand dominated player. Love to play into the leg side. And that can happen when you drive with a lot of force. Your bat closes early on. Can be dangerous against swing. Again, just throwing down the leg. Got away with it. The fielder was inside the circle. First over gone, FATA, 5 without loss. Shahryar will share the ball with Hasnain. We saw how the bowling partnerships for FATA has worked throughout this tournament with the new ball. Sirajuddin and Afaq were very effective. Hyderabad off to a good start. Shahryar will have to continue hitting the right areas. Short and wide. I'll have to bowl that again. Yeah, why to start off with Shahryar? Because the intent is so lethal that they're looking to go after anything, everything that's coming their way, both Farouk and Naim. So it can get a little pressure situation for the young fast bowler. That's why he's trying to bowl it away from the batter. In the slot. Has it carried? No. Did get an edge on it. Well, you would expect the openers to utilize the power play.
Just 2 fielders allowed outside the circle, so they will chase anything outside off. Look at that delivery, stuck on crease. There was no edge, rather it did carry. There wasn't. That's gone. That's the channel. With Gibbon was very ambitious. Farooq went hard at it, and Shahryar picks his first. Yeah, you called it right. Very ambitious. That's what they were looking to do. They wanted to go big, hard at the fast bowlers. And very impressive from Hyderabad. Both bowlers, they've not been scared to bowl it up to the batters. They were wanting the batters to go for it, go for the drive. That's what he did. A bit of a nothing, just a slog. And a smart catch behind the stumps by Akbar Khan. And jubilation for Shahryar as he gets his first wicket. Mohammad Farooq gone for 5. It's 6 for 1. No worries there, Shahryar. That was the plan, just around outside off stump, hitting the hard length, and they picked up their first. It's a good start for Hyderabad. The wicketkeeper batter, Riana Afridi, played really well in the previous game. Scored a 50. He was a very important part in that inning. He will have to probably do it again. We'll have to bowl that again. Yeah, the idea is right, but the line isn't. The length will work for Shahryar. It's one thing going after anything outside off stump. Yes, it seems like a free hit for you, especially in the power play. But again, the technique. Look at the foot. Nowhere near the pitch of the delivery. Just planting it straight down the wicket. And that makes you stay away from the ball. And even when it's swinging, it makes it harder to play that sort of strokes. And also the angle of the bat. I wonder, he was looking to play towards onside. The ball moving away from him. I mean, he would have been better off if he had attempted a shot over cover or extra cover mid-off. That's probably was the right way to go. But when you look at that dismissal, his bat was inwards towards onside. It has to be because of the foot. When you look at the foot planting down the track, your body stays squared up. So you cannot play towards the cover. So naturally your body comes and the bat face stays towards straighter area. No, it's just flirting around there off stump. Bit fuller on that occasion. But they're up, creating some problems for FATA. Yeah, one thing is for sure that they've come out with a plan. Shahryar and Hasnain both, that they're not giving away any length deliveries or short pitch deliveries. We haven't seen any so far. Yes, he's given away 3 wides, but he's still continuing to bowl up to the batters. Make them drive and create those opportunities. That's probably is the plan. Just shuffling, trying to counter that swing. It's a good start from Shahryar, hitting the right areas. Much fuller on that occasion. FATA won the both games batting first. Today they are chasing. Yes, they have a lot of star power. They've got batters who can come out and score runs quickly. But again, with that sort of total and this start, they might reflect on how they can go about this run chase. Again, with Given, went hard at it, but they've got protection.
Yeah, Hyderabad must believe they can defend this total. 198, that's a king size total. So one should always believe, yes, as you said, FATA is a very good side. They've got depth in their batting. But still, to get to 198, it takes a lot. So if you stick to your plan, stick to the basics, be disciplined, there's no reason that you cannot defend this. They're not timing it, neither Rehan nor Naim. Dot to end the over, another good one for Hyderabad. FATA 1 down on 9. $198. That's the target for FATA. Off to a good start, Hyderabad. Both the fast bowlers have been disciplined. Few extras. But Hasnan has started off well. Missed. Will be runs, free runs for FATA. Yeah, that's not anywhere close to being disciplined. First from the fast bowler, way down the leg side, and then a better effort was required behind the stumps from Akbar Khan. If you've got the team under pressure, you got to keep it tight. You cannot lose that grip by giving away easy boundaries. That's that simple. Much better. Good line, good length. That's where he should be bowling consistently. And it's not easy to play on the up shots on this surface. Hasnan, he's got a decent pace. Yeah, more than decent. He's quick. He's being picked by Islamabad United in HBL PSL. New franchise for him, new experience, new mindsets. Very attacking franchise. Bit of shape there. We'll have to bowl it. And that's a harsh call, I might say. But they're not getting anywhere near the delivery. Naim, constant conversations going on between these two. He went after it. Marginal call. Could have gone either way. But it's a line that matters. I think Hyderabad bowlers, they've surprised FATA batters by bowling those fuller deliveries on every occasion. Picked up. That's where he likes it. And it's gone all the way for 6. Yeah, that's a marvelous one. He's been searching for that. Naim, but this time it was in the middle and he just flicks it all the way for 6. We've been talking about how much talent this boy has and how much trust Lahore Qalandars have put in him because I can play shots like this. And trust me, this was not from the middle of the bat. His bat rolled in his hands, but still he was able to get it for 6. Yeah, anything in this zone, he can play shots like this all day long. Oh, went again for it. This line, slightly, the line was different. Most of the time, he tends to target the cow corner, the mid-wicket area. What he can do, and that might improve his batting, is also try to hit straighter. You can see his bat coming in the path that always goes towards extra mid-wicket area. Look at that. Had he tried to hit it straight, might have had found a connection. Not just him. Every batter that we've seen in this tournament
he fancies that cow corner or long on. Yes, you can bring out the best force trying to play that shot, but proper batting has always been very fascinating. Slip out now. Shot mid wicket in. And again. This wild swing. He's not watching the ball. Naim is trying to hit it hard. You can see the head getting up quite early. He's through the shot very early. But this is good. I like what Hasnan is doing. He's not afraid to get hit. He's consistently bowling in that area. Yeah, he's executing the plans beautifully. A, the team's plan, A, his own plans, where he needs to be, what he needs to do to get a batter out. I think he's done a brilliant job so far. Yes, he's given away 13 runs and a 6 in this over. But still, he's creating something different. And again, swing and a miss. Dot to end the over. FATA 1 down on 21. Three overs gone, 21 for 1. FATA is chasing 198. Shariat to continue. Smashed, but good fielding. It was hit hard and they will steal a run. Yes, it was hit really hard. Unfortunately, could not quite find the gap. It was hit straight to Suleiman. Again, shuffling across, looking to get close to the pitch or the line. Getting the connection, Rehan Afridi. I think that's his role probably in this partnership. Give the maximum strike back to Naim. Apesh. Ooh, just awaits the fielder. Looking for the second one. It's not there. Naim, he's a player that he can hit sixes at will, but he needs to understand that he can take his time. Right now, he's struggling. He's forcing his shots, not looking comfortable at all. See, that's the test for these young batters. If the ball is doing a bit and the bowlers are bowling in the right areas, then what do you do? What's the plan B? Yes, it's all easy when it's working for you. The bowlers are bowling poorly. Rehan Afridi smacks it through cover and mid-off for 4. While the focus is on Naim, he struck a beautiful boundary. Yeah, much controlled, balanced shot from Rehan. Shahryar pitching it up. Well, this length comes with risk and reward. Just again the width, that's the problem. The line has to be much closer to off stump. I don't mind the length. He's got a really nice shape on the ball. Straight down once again. This time fuller and straighter. Yeah, what Rehan Afridi is doing different from Naim is that he's shuffling across. He's trying to get close to the line of the ball. That's why he's got the connection. And Naim on the other end, he's just standing at one position and just heaving it. That's why he's been beaten so many times outside the off stump. So maybe look to shuffle towards offside and then look to get that connection. He will have a better chance of it. Just a shimmy down the ground. Got enough bat on it that it will race away for 4. Yeah, he's disappointed. It wasn't a bad delivery at all. But Rehan Afridi, you know, he's moving around in the crease. He's doing different things.
So different things giving him different results. Simple. Again, I think they're trying to really hit it hard. And what it does to your body as well is makes you stiff. And you cannot transfer the power that you generate from your base into the shot. They need to time and utilize the pace that has been offered. Much better just getting behind the line. Dot to end the over. FATA 31 for 1. Change in bowling, spin straight away, and it's Noman Ali, the all-experienced. It'll be interesting to see how Naim will take him on. New ball with field restrictions, just 2 allowed outside the 30-yard circle. Has got a long on in place and deep square leg. Oh, just creating some room, trying to slam it through the covers. You will have to keep that in mind that the ball might not turn, it will skid. This will be a good battle. The flamboyance of Naim and the very experience of Noman Ali. And again, just going with the angle. Yeah, he's just feeling a little bit of heat at the moment. He's taken 11 deliveries for his 7 runs. That's not what he's used to. Down the ground, beautifully bowled by Noman. Chance of a run out. And a little bit of misfield will allow Naim to come back for the second one. Nah, that's not good. Noman Ali had bowled a beautiful over. And then that misfield just letting him down a little. But I got a feeling that Naim against Noman, something is supposed to happen. Yeah, that's the experience. That's wonderful. White ball cricket, a bowler, a young batter looking to dominate. And look at this big man, the old man is doing. Yeah, that's what experience can do. He knows that Naim is not comfortable trying to charge him. Oh, just straying down the leg. He's trying to create an angle where he doesn't give Naim any room to maneuver with. He likes to go into the leg side, but for that he needs certain line and length. ABS Developers, title sponsors for this tournament, world's first Sharia compliant real estate company. Good ball, good ball. Full toss. That's what can happen. When you're under pressure, you might miss the loose deliveries because you're looking to hit each and every delivery out of the park. 100%, absolutely. Rehan Afridi look for a sweep maybe. He's a good sweeper of the ball. Straight to the fielder. Good bowling backed by some good fielding. 5 overs gone, FATA 1 down on 35. हम दोनों जा रहे हैं ना बैटिंग के लिए जाने जाते हैं लेकिन जो आगाज हैदराबाद के बॉलर्स ने दिया है बहुत ही शानदार है नुमान का पिछला ओवर काफी टाइट रहा शहरयार कंटिन्यू करेंगे
एक बार फिर वही कोशिश, बार बार यही शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जोर से मारने जा रहे हैं नईम। शहरयार जिनकी गेंद ऑलरेडी राइट हैंडर को छोड़ते हुए जाती है, थोड़ा और पीछे हट के खेलना चाह रहे हैं और कामयाबी हासिल नहीं हो रही है इन्हें। प्रेशर काफ़ी डाल दिया हैदराबाद ने, अच्छा मोमेंटम सेकंड इनिंग्स में कैरी किया क्योंकि आखिरी 10 ओवरों में 127 रन हैदराबाद ने बनाए थे। FATA 36 for 1. छत्तीस पे एक फाटा। रेहान पिछले मैचेस में अच्छी फॉर्म इन्होंने दिखाई है, इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, साथ नईम। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, टाइमिंग नहीं मिली है, एक चांस होगा लेकिन फील्डर जो मिड ऑफ पे थे बिल्कुल जज नहीं कर सके इस गेंद को और करीबी मामला था लेकिन बच गए रेहान। ये जो अभी हमने देखा, बट सब इस पे आप मजीद बात कर सकते हैं जब रिप्ले आएगा कि किस तरीके से बगैर पीछे जाने के वो इंतजार करते रहे कि गेंद ने गिरना कहाँ है और तयशुदा बाद गेंद ने काफी पीछे जाना था और ये एक जबरदस्त अपील और इस तरह ये दूसरा धचका, रेहान आउट हुए और शहरयार को कामयाबी हासिल हुई है। कट पुल करने गए थे, टॉप एज लगा और सीधा महफूज हाथों में गया विकेट कीपर के। तो इस तरह फाटा बहुत ज्यादा दबाव में, ये दूसरी विकेट है जो कि गिर चुकी है और सिर्फ 5 ओवर और 3 गेंदें हुई हैं। जी हाँ, यहाँ पर दूसरी कामयाबी मिली हैदराबाद को। 38 स्कोर पर दूसरी विकेट गिरी है फाटा की। इस बार शॉर्ट बॉल थी और लीगल डिलीवरी है, ये कोई मसाइल नहीं यहाँ पर। और इसको पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद ज्यादा उछला, एक्स्ट्रा बाउंस, ऊपर कैच लिया सर के ऊपर कीपर ने। रेहान अफरीदी जो कि इनफॉर्म प्लेयर थे, 13 रन बनाकर वापस चलते हुए 38 पे 2 फाटा। समीउल्लाह जूनियर अब आए हैं, उनके लिए काम आसान नहीं होगा। शहरयार काफ़ी तेज़ गेंदें कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं और खेलना ज़रा मुश्किल हो रहा है। जो अभी तक बैटिंग का स्टैंडर्ड रहा है उसको अगर देखें तो मुश्किल होगी। सबसे काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद वाइड। अगर हम बात करें कैच लेने की तो सारे कैच हाथों में नहीं आते, आपको दौड़ना पड़ता है। अब ये देखिए, पहले तो पीछे खड़े, अब ये देखिए, ये काफ़ी अफसोस मिलता है। मसीहा सामने मेरे, आप पकड़ लें कैच को, तकल्लुफ़ कर लें और इसमें तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है क्रिकेट में। ये कोई इतना आसान खेल नहीं है। मिड ऑफ पे फील्डिंग निस्बतन आसान होती है। जैसे ही गेंद हिट लगी मेरे ख्याल में बट सब ज़रा मजीद रोशनी डालिए। उम्दा गेंद लेकिन स्लिप नहीं थी वहां पर। इस बार ये जाएगा 4 रन के लिए। बॉलर एफर्ट कर रहे हैं, गेंद स्विंग हो रहा है, टोटल बेशुमार रन्स पड़े हैं लेकिन कप्तान ने स्लिप क्यों नहीं रखी, वजह समझ से बाहर है। एक नए आने वाले प्लेयर जो अपना पहला बॉल खेल रहे हैं, उनके लिए तो कैचिंग पोजीशन होनी चाहिए थी। ये एक कहिए नाकिस हिकमत अमली। देखिए
एज लगा है ये, और यहाँ वाइड स्लिप या सेकंड स्लिप होती तो ये दूसरी विकेट इसी ओवर में मिल सकती थी, मजबूरी तौर पर तीसरी हो सकती थी। इस बार बैकफुट पे पंच किया 1 रन के लिए। 44 पर 2, इस तरह 6 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो पावर प्ले की जो एक सहूलत है उसका अब इख्तिताम है। अच्छा, ये जो है ये देखो मैंने इसको यहाँ से ऐसे किया, ये बंद कौन कर? मिडल है ये। इधर हो, ज्यादा चला गया। आए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डन नोमी भाई, वेल डन। नोमान सही वक्त मुतारिफ हुए हैं। ये नपीतुली बॉलिंग करते हैं और एक कामयाब टेस्ट क्रिकेटर हैं, सुपर फिट हैं और हम वक्त कोशिश करते रहते हैं कामयाबी के सिलसिले में, पर खींचा गेंद को। जी हाँ, नुमान बहुत ही तजर्बाकार और मंझे हुए स्पिनर हैं और जानते हैं कि नईम जो है वो बड़ी हिट की ताक में रहते हैं हर वक्त, और इसी की मुनासबत से उन्होंने लेंथ को थोड़ा सा पीछे ड्रैग किया है। आजा डेनी। ज्यादातर बॉलिंग ये अपनी फील्ड की तरफ ही करते हैं और इनकी खासियत इनकी एक्यूरेसी है। बेशुमार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, बेशुमार लंबे लंबे स्पेल किए हैं और उसी का ये नतीजा है कि इतने ये एक्यूरेट हैं। ये देखिए उम्दा गेंद, इस बार थोड़ा सा स्लो किया, फ्लाइट किया और टर्न हासिल किया इन्होंने। इस पिच पे किसी भी बॉलर का, स्पिनर का हमने इतना टर्न नहीं देखा जिस तरह से ये गेंद ब्रेक हुआ। ये एक लेफ्ट आर्मर की बेहतरीन गेंद होती है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इससे बेहतर गेंद हो नहीं सकती। काफी आगे पड़ी, शार्प टर्न हुई और समीला को समझ में नहीं आया, इस बार अंदर लेकर आए, आम डिलीवरी थी। तो ये इनकी खूबी है नोमान की। आप देख लें जब वो बॉलिंग करेंगे तो चढ़ाई कर देंगे बैटर, जब बैटिंग करेंगे तो लगेगा कि ये इनको बैटिंग का फन भी बड़ा, उससे बखूबी वाकिफ हैं। तो ये कामयाब क्रिकेटर की एक निशानी होती है। उम्दा गेंद, एक बार फिर जब जब ये नईम को गेंद करते हैं थोड़ा सा लेंथ हल्की सी पीछे रखते हैं ताकि उनकी आर्क में ना आए। 7 ओवर्स का अख्ताम और फाटा 48 पे 2। इस बार सामने हिट लगाई है नईम ने और फील्डर की उम्दा कोशिश, और शायद गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कह लीजिए चोट खाई है इन्होंने अपने हाथ पर और इस वक्त काफी दर्द में लग रहे हैं रिजवान महमूद। बहुत ही शानदार एथलीट है, अच्छे फील्डर हैं, लेकिन बदकिस्मती शायद हाथ उनका ग्राउंड में फंसा है। ये वो शॉट नईम ने खेला, जी हाँ, उनकी 2 उंगलियां जो हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर जाक लगी और उसी वजह से शायद वो इस कदर तकलीफ में है, और 4 रन्स का इशारा भी कर दिया है।
खिलाड़ी इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, बार बार ज़मीन पर लेट जाते हैं। फिटनेस के इश्यूज इनको मेंटेन करने के लिए सारे के जो डाइटिशियन हैं या फिर इस तरह जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के सिलसिले में काफ़ी पेशरफ हुई है। मज़ीद इसमें अपने आप को बेहतर करना होगा। बहरहाल अच्छी एफर्ट थी, लेकिन 4 रन फिर भी हो गए। सही है अनुभव बाबा, ये अनुभव आ जाए नवी भाई। सिंगल। अब रन्स के पहाड़ हैं, 198 रन बनाने हैं, 7 ओवर 2 गेंदें 53 रन, बल्कि 54 हो गए हैं। अब यहाँ पर अब एक बड़ी और तेज़ पार्टनरशिप की ज़रूरत है। नईम ने 20 गेंदें खेली हैं 17 रन के लिए। फ्लाइटेड ड्राइव ऑन साइड पर और गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। ये एक अच्छी अटेम्प्ट थी, ज़्यादा फ्लैटेड गेंद थी ये। जी हाँ, नईम को अब थोड़े अपने जौहर दिखाने होंगे। 21 पे पहुंच गए हैं, 21 गेंदे 21 रन, और इस गेंद को भी बड़ी हिट लगाना चाहते थे। शायद थिक इनसाइड एज लगा, जिसकी वजह से गेंद मिड विकेट की तरफ गई, क्योंकि इनके बैट का फ्लो ऑन साइड की तरफ है। उम्दा गेंद, और ये शायद दूसरा गेंद है जो टर्न हुआ इस तरह से। तो ये जब एक विकेट पे, शायद इस पिच पे ये 5वां मैच हो रहा है, आज तीसरा दिन है, तो थोड़ा सा कह लीजिए कि ड्राइनेस पिच में आई है और थोड़ा स्पिनर्स को असिस्ट कर रहा है। एक बार फिर उम्दा बॉलिंग, बहुत ही शानदार लेग स्पिन बॉलिंग हम देख रहे हैं, क्लासिक लेग स्पिन। और 8 ओवर्स का अख्ताम इन 2 खूबसूरत गेंदों के साथ, 58 पे 2 फाटा। इधर 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 बस पीछे हो जाए, यहाँ से पीछे हो, पीछे हो, थोड़ा इधर हो, थोड़ा इधर हो, बस बस। कैच, ओए नहीं चले चले चले, कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। इस बार बैकफुट पे पंच करना चाहते थे, लेकिन सीधा वापस बॉलर की तरफ खेला। देखना होगा कि ये चांस था या नहीं। क्या ये गेंद नोमी तक कैरी की है? शायद सही तरीके से जज नहीं कर सके। ये एक चांस था। गुड बॉल। और नुमान वैसे एक कह ले बड़े महफूज फील्डर हैं, कैचेस पकड़ते हैं, लेकिन शायद इस गेंद को सही तरह से देख नहीं पाए। फॉलो थ्रू में वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि गेंद काफ़ी शार्प टर्न हो रही है, तो ऐसा कम हुआ कि बैटर जो है दोबारा इनकी तरफ खेलें। और जिस लेंथ पर उन्होंने गेंद की थी, मुतादिद गेंदें उस लेंथ पर स्पिन हुई हैं और बेस्ट स्पिन हुई हैं। ये देखिए, आसान नहीं था। तो अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि जहाँ गेंदें सीधी रही हैं, वहाँ आज स्पिनर्स को इस विकेट पर मदद भी हासिल हो रही है और देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बात तयशुदा है कि जो बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करेगा, वो रन बनाएगा। 198 रन का हदफ इस अमर की एक गवाही है, जो हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए खड़ा किया था। फाटा के लिए एक चैलेंजिंग टारगेट है सूरत हाल में, जब नुमान नबी बॉलिंग कर रहे हैं, आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचा स्ट्रोक खेला है, काफ़ी देर तक गेंद हवा में रहने के बाद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। ये बड़ा छक्का था और बड़ी जुर्रत दिखाई नोमान अली। नबी बॉलिंग कर रहे थे, अच्छा फ्लाइटेड गेंद था, लेकिन बिल्कुल जो फॉलो थ्रू था उसको देख के लगता है कि एक सही एफर्ट थी नईम की। जी हाँ, इस बार कदमों का इस्तेमाल और पहुंचे गेंद की पिच पे, और फिर एक पूरी फ्लरिश बैट की, मिडल किया इस गेंद को और पहुंचाया बहुत दूर। स्क्रीन से बहुत पीछे जाकर ये गेंद गिरी है, देखिए बहुत ही उम्दा बैट स्विंग और मिडल किया इस गेंद को।
जाए इस आहा बार ब्यूटी थोड़ा ब्यूटी तेज नमी भाई गेंद, ब्यूटी नमी भाई इस ओवर में एक छक्का बहुत आला लगा बहुत नईम आला बहुत आला नुमान को, और इससे पहले 3 सिंगल हुए, 9 रन्स दे चुके हैं। तो अब इनकी कोशिश होगी कि ये बाकी गेंदें डॉट करके ये इनकी विकेट ले सके। ठीक है ठीक है ठीक अच्छा है ठीक है खेला है इसको नईम ने, 10 रन्स पे इस ओवर का खात्मा किया है, 68 पे 2। चेदा चेदा दानियाल राजपूत अब गेंद कराएंगे, देखना होगा कि क्या करते हैं, क्योंकि इनकी जो डिस्क्रिप्शन आई है उसमें तो सिर्फ बॉलर लिखा है। ऑफ स्पिन, राजा साहब ये ऑफ स्पिन को बहुत आसान बॉलिंग समझा जाता है, हालांकि एक पूरा आर्ट है। मुझे याद है अच्छी तरह कि अंडर 19 का हमारा मैच था और हम लोग फैसलाबाद से खेल रहे थे एलसीसी में लाहौर में। तो मैंने अपने कोच से कहा, हफीजुर रहमान साहब हमारे कोच थे, वो खुद भी ऑफ स्पिनर थे, नेशनल बैंक के बड़े जाने माने ऑफ स्पिनर थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अच्छी गेंदें कर लेता हूँ, मुझे भी बॉलिंग करनी है मैच में। तो मुझसे कहते हैं आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा ऑफ स्पिन। कहते हैं जड़ा कुछ नहीं करता, ऑफ स्पिन करता। तो ये करीबी मामला हो सकता है, अपील की लेकिन बच जाएंगे इस बार नईम। नईम ने क्रॉस खेला और आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए इस वक्त जो आजकल की कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है उसमें खाल खाल आपको ऑफ स्पिनर नज़र आते हैं, ज़्यादातर लेग स्पिनर्स हैं। आउटरेच और ऑलमोस्ट एक ख़तरनाक गेंद थी दानियाल राजपूत की। लगता है जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं इस विकेट पर राज करेंगे, सीधी सीधी तेज़ तेज़ गेंदें कर रहे हैं और जल्दी ओवर भी ख़त्म कर देंगे। बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखे, पाकिस्तान की तरफ से भी देखे। और ये है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, 25 years, यानी क्वार्टर सेंचुरी ऑफ बिल्डिंग अ लेगेसी, कोई शक नहीं। ड्राइव ऑफ साइड पर डीप कवर की जानिब और ये चौका होगा। अब ये अच्छा टाइम क्या हुआ स्ट्रोक तक, शॉर्ट गेंद थी, इसको बुरी गेंद तो नहीं कह सकते, लेकिन एंटिसिपेट अच्छा किया समीला जूनियर ने और 4 रन हासिल किए। इस बार गेंद काफी पीछे थी, काफी बहुत रूम मिला बैटर को और जोर से उन्होंने कवर्स में इस गेंद को खेला, 4 रन हासिल किए। इस गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन एक ही रन बनेगा। 10 ओवर्स का अख्तिताम, फाटा 76 पे 2। मैंने वैसे आपकी किस्मत है, मैं उससे वो स्मॉल लेता हूँ, सुबह रेगुलर दे दिया आप भैया। हाँ 76 for 2 Fata.
76 for 2 FATA. That's how the opening started. Outside Rostam trying to slash it hard. A good take by the keeper, and this one again within the stumps, took off and got the edge. They've bowled really well, but somehow FATA has managed to scamper along, scoring 72. 10 overs remaining. They have all the powerhouse in their batting to chase it down. But this part will be crucial. This middle phase. We've seen Naim what he can do, but he hasn't been in his full flurry. Yeah, he's been very lucky also. I think he has forwarded every Islamic WhatsApp message that has come his way, that if you forward it, the luck will come your way. That's how lucky he has been in this inning. Very rusty. But yes, as you said, he surely can turn it around in no time. 121 still needed of 59 deliveries. Still have a look at this run out appeal that Hyderabad did. Again, he's forwarded another message here. He's been very lucky. The belief surely in the camp of Hyderabad. But they must not let this belief get to their heads. Situations can change very quickly, especially when a player like Naim is on crease and Khushdil Shah to come, Sarwar Afridi to come. There are a couple of things to look. He was still holding on to the bat and his foot landing inside crease. I think it seems okay. Yeah, he does. But he did lose the grip of the bat. There's few things that you teach the young players is to drag the bat. Safe here. 121 needed of 59. Well, Hyderabad, all they need to do is just focus on the dot balls. Yeah, didn't drag, he just tapped it. And it did get stuck. And from this angle, it's more interesting than we thought. See, the bat is grounded, and if it's inside the crease once, it is safe. Just, we've got a lot of time, that's okay. Launches. There is a fielder, but evades it. Gone for maximum, but just nearly. He was again not in control. A better, taller fielder would have surely taken that one. It was that close. But he kept on looking at it. The fielder at deep square leg. Look again. It didn't time it properly. Just forced it as he'd been trying to do it. It's just a wild swing. See, a better fielder. He would have been at the boundary line. Then he would have jumped. Then looked to take the ball. FATA has plenty of batters left. And somebody who has impressed us with his all-round abilities is Sarwar Afridi. A very good all-round cricketer. He's here with us. Let's talk to him what he's thinking about the game, what he thinks about his own plans in his cricketing career. Sarwar, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं? इफ्तार कैसी रही? जी जी। इफ्तारी कैसी रही? शुक्र है अच्छी रही जी। मैच के बारे में बताइए, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स, अभी काफ़ी रन्स हैं, तो कैसा देख रहे हैं मैच को? इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, जैसे नईम खेल रहे हैं और बाद में खुशी आएंगे, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। और रन्स तो ये है 12 एवरेज का है रन्स, तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, ट्राई करेंगे अपना। जैसे आपके मैच में आपकी जो टीम है उसमें काफ़ी मैच विनर्स हैं, बॉलर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं और आप भी ऑलराउंडर हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे आप बैटिंग भी करते हैं। उस रोल को, जो रोल चेंज होता है, उसको कैसे अडेप्ट करते हैं, उन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमें जो रूल्स मिलते हैं जहाँ भी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो उसको अप्लाई करें वहाँ पे और 100% दे जी। यार हमने देखा कि आपके साथ और भी बहुत प्लेयर हैं, तो क्या ये आसान होता है या मुश्किल होता है जब आपके साथ और
प्लेयर्स मौजूद हों कि आप उनके ऊपर कभी छोड़ सकते हैं कि वो है वो कर लेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अली भाई। देखे ऐसा नहीं कह सकते कि किसी और पे छोड़ दे। जो हो हमारा प्लान यही होता है, जो अंदर खेलता है ना उसको हम उसको यही प्लान देते हैं कि कोशिश करे कि मैं ही फिनिश कर दूं। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर जो खेलता है वही बस कोशिश करते हैं कि वही फिनिश करें। सर आपकी बैटिंग एबिलिटीज़ का तो बहुत चर्चा है, हमने बहुत बार देखा है आपको बहुत शानदार इनिंग्स खेलते हुए। क्या बॉलिंग को आपने खुद से उस तरीके से ज़्यादा परसू नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया जितना होना चाहिए था? क्योंकि हमें लगता है कि आप काफ़ी हैंडी मीडियम पेसर बन सकते थे। जी अली भाई, ऐसा था कि इंजरी आ गई थी बीच में, तो 1 साल मैंने बॉलिंग नहीं की। तो अब दोबारा स्टार्ट किए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि प्रॉपर बॉलिंग भी साथ में करूं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा बैटिंग के साथ वो भी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप साथ बॉलिंग कर सकते हैं तो जिस भी टीम से आप खेलेंगे आपकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी सरवर। जी जी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आइंदा के साथ में बॉलिंग को भी जारी रखूं, नेट्स में भी बॉलिंग करूं, तो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट सरवर अफरीदी फॉर योर फ्यूचर, और इस मैच के लिए भी, इस टूर्नामेंट के लिए भी। थैंक यू जी, थैंक यू अली भाई, थैंक यू। Samiola and Naim both are trying to accelerate. Few dot balls, that's all Hyderabad needs to focus. Again shuffling across, goes against the line. Fielder settles himself and catch taken. It was just a matter of time when Hyderabad would have picked up another wicket. And this is exactly one. Daniel gets his first. Yeah, it was just not happening for both of them. Somebody had to do it. Somebody had to go big. Samiola tried, but he didn't get that distance. Well, look at this. Slower in pace. That's where they've been very impressive, Hyderabad bowlers. And a very nicely judged catch. Reverse cup. It's not missing out on those. Samiola Jr., he's looked good for his 19, but will have to walk back. It's 91 for 3. Khushdil Shah, well, he carries the reputation with himself. A fighter with the bat, with the ball, always keen to win games for whichever side he's playing. And this is a tailor-made situation for him. 91, 3 down. Doesn't have a lot of time. He needs to get going from ball 1. Good thing is he has Naim on the other end. I don't know if it's a good thing, because he's struggled big time. Yes, he scored 43 runs, but he's nowhere close to what he's capable of. But he's still hanging in there, he's fighting it off, he's seeing that difficult part off. Something what Shajil did, he also fought it out. That's he's doing, Naim is doing the same. Dot ball, that's good bowling. Daniel changing the pace, slower through the air. Can fire one in as well. This one very slow, asking him to go big. Was nowhere near the pitch of the delivery, or even tried to cover the line. Now, one thing will happen with Khushdil and Naim is Khushdil will run hard between the wickets and will force Naim to take on some risk. He don't have much time to settle in. Unfortunately for Khushdil, the required rate is just creeped up to 12, more than 12 now. So he will have to start off quickly. 12.7, the exact required run rate. But it's now the responsibility or the onus is on Naim that he gets going. Got a deep extra cover. And that's exactly where he's aiming to bowl. This is smart bowling. Got 3 men behind square on the offside, 2 guarding the boundary in front. 1 to end the over. FATA 93 for 3.
शाबाश 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 Right, the required run rate is jumped up to 13.12. I think it's now or never, because once that required run rate gets to 15 and above 15, then it gets difficult for even the best of the best. Again, not timing it. It has been a very rusty inning from Naim. Yeah, what you can do is just get out of that shell, try to rotate strike, try to rotate it rather than trying to establish your own dominance. This is not working for Naim. From ball one, he's trying to slam each and every shot. Hasn't timed one. Oh, Khushdil, wild swing towards the leg. Jawad. Well, they are on top, Hyderabad right now, creating problems for FATA to chase this down. Goes the other way. Still no run. Well, wide is given. He opted for the reverse. Khushdil Shah. They need to think, and they need to think quickly. They need to have a plan and then execute, FATA. Because right now they're playing in the hands of Hyderabad. They're happy giving away signals. Even another one. Picked up a couple. Yeah, something that you mentioned in the previous over, that once Khushdil Shah is out there in the middle, you'll see those singles being converted into twos and twos into threes. And he played it with soft hands. Came back for the second. But yeah, you say plan. I don't think so. There's any need of plan here. They'll have to go right after every ball that comes their way. The thing that concerns me is one-dimensional cricket. They're asking. Akbar was very sure that it had something off the bat. The one-dimensional cricket. When you look at Khushdil, when you look at Naim, they both are targeting leg side, not shuffling. This is the first time it was way outside off that he went to play the shot towards the offside. You cannot be a one-dimensional cricketer anymore. 13 gone, 98 for 3. ABS developers, National T20 Qualifiers, FATA facing off Hyderabad. And right now, Hyderabad is on top. They were, even in the first innings, again, just trying to slam everything into the leg side. They're not thinking, they're not reading the bowlers, they're not reading the game at all. See, that's the trouble. If it comes off, that's hardly, then it looks good. Then you're hitting big sixes because you're so confident about this approach going towards one area. If it comes out, it looks good. But most of the time, it won't come out. And you will look very ugly as a player, and it will give people like us opportunity to criticize it. So it's always good to have variety and the range of shots with you, so that if your one shot doesn't work, you have other shots to go to, other areas to go to. And at the moment, both Naim and Khushdil seems like they don't have any other area to go to other than the mid-wicket area. See, again, he's just doing one thing, going towards cow corner or the long on. They've got 3 men patrolling the boundary, deep square, deep mid-wicket, long on, long off, and deep extra cover as well. And still you can see Naim trying to force the shot into the leg side. Well, this time he got hold of it.
Played behind square for that 6. And 100 up for FATA. Yeah, this was not a good delivery. Bowled it into his body, into his pads. This is where he's looking for. This line is easier for him to hit it through that mid-wicket or long on or square leg area. Ball it outside the off stump. He brings up his 50, by the way, of just 39 deliveries. This one is also hammered down the track. Oh no, that's a poor effort. You don't expect that from your premier fast bowler. Not on. Yeah, it's going to hurt. It's going to hurt Daniel. Previous one, a bad delivery onto the pads. Naim went for maximum, and this one should have been a single. Again, this is a better line and length. Better effort should have been put out. Drop shot! Just awaits Daniel. Or did he drop it? We'll have to see. He saw Naim charging down, dragged the length shot. Dot to end the over, FATA 109 for 3. भाई ऐसे Straight up, ballooned up in the air. Couple of fielders coming in and an easy catch taken. Daniel with the safe pair of hands. Jawad picks his first. Yeah, this was supposed to happen. This was bound to happen. Shajil Shah had no time to settle, although he still took 10 deliveries before thinking that he wants to go big. Again, very smart piece of bowling. Just whipped it into the surface to get that extra bounce. Shajil Shah wasn't expecting it. He just top edged it. And a good catch by Daniel in the cover area. Shajil Shah was caught by Daniel of Jawad, scoring 5 runs. It's 109 for 4. The man for crisis, Sarwar Afridi. It's a tough task for him. 89 needed of 36. Naim, yes, he's scoring runs, but he's struggling. Dot balls are coming in, and that's handy for Hyderabad. Straight away, he has to get into the act. Sarwar Afridi. Hyderabad, what a performance. They started off well with Shajil batting, and then a brilliant innings by Akbar, posting a mammoth total. And now very clinical with the ball. Straight away, he does go, but wasn't able to middle it. You know, a team that would be scratching their heads would be Rawalpindi, who were beaten by FATA in the first game, and then they were beaten by Dera Murad Jamali. Had they won their remaining games, but Naim is struggling. Good ball. Although he has scored 50 runs, we've seen some quality shots, but very few of them. This is the last wicket. So coming back to the same point, Rawalpindi, had they won against Dera Murad Jamali, they were surely in contention to go to the next round after this performance of FATA. They're going to probably, it seems like, lose from here. I need those messages to forward. Straight up. Bowler coming under.
He makes no mistake. The misery ends. For Naim, he was struggling. Made the team struggle also with this inning. Scored 55 but took 44 deliveries. He will have to now walk back. Caught and bowled by Jawad. Again, just trying to play one-dimensional cricket. Didn't try to counter even the line by shuffling. A couple of dot balls and pressure was building. No worries there. They knew that what they had to do. Hyderabad bowlers trying to just pitch it across. Naim keeping the ball away from him, and that has worked. Again, you can see not shuffling at all. This one came in, couldn't really get underneath. It wasn't that short to play that rather pull, and Naim got out. Hyderabad are on the top. 5 down on 110 as Naim walks back. वसीम खान नए आने वाले बैटर। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ख़राब है फाटा रीजन के लिए। 5 ओवर्स में 88 रन दरकार। इक्वेशन खासी आसान नहीं होगी। दोनों बैटर न्यू हैं। खुशदिल भी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके। मुकाबले एतमाद बैटर थे और जिनका बल्ला रन्स बना सकता था। बिलखुसूस आखिर के ओवर में जो बैटिंग होती है उसमें काफ़ी पावर हिटिंग करते हैं खुशदिल। और पहली बॉल पर ज़ोरदार तरीके से खेल दिया और 4 रन्स का इशारा अंपायर का। लॉग ऑन पे फील्डर मौजूद थे लेकिन बड़ा तेज स्ट्रोक था। और अब इस तरह के जा बजा शॉट्स लगाने होंगे। दरकार औसत है इस वक्त खतरनाक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। वो पिच डिलीवरी थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर मौजूद थे लेकिन कुव्वत इतनी थी और तेज इतना था कि फील्डर वहां कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार तो फिर ओवर द हेड ऑफ द बॉलर, काफी सेफ खेल दिया है। डाइव लगाए लेकिन बॉल गया सीधा बाउंड्री लाइन के पार। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 चौके यहां पे लगा दिए हैं सर्वर ने। तो जिस तरह की बैटिंग दरकार है आखिर के ओवर्स में फाटा को, इस वक्त सर्वर उनको जिम्मेदारी का एहसास है कि उनकी टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। इसमें तो थोड़ा सा अभी लाइन को शॉर्ट किया था, काफी टाइम मिल गया था सर्वर को। नैन ने एफर्ट की, स्लाइड किया लेकिन बॉल को ना रोक पाए। 28 गेंदों पर 80 रन दरकार। सर्वर एक बार तो फिर घुमाया जरूर था लेकिन डीप कवर में फील्डर मौजूद थे। हर गेंद पर अटैक करना होगा, हर गेंद को बाउंड्री या 6 के लिए खेलना होगा इस वक्त फाटा रीजन को, क्योंकि इससे सफर आसान नहीं है। दबाव काफी अच्छा बनाया हैदराबाद के बॉलर्स ने। रिक्वायर्ड रन रेट 17.56, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत गैर मामूली क्रिकेट दिखानी होगी वसीम और सर्वर को। सिंगल्स और डबल्स कुछ नहीं करेंगे सिवाय दरकार औसत को बढ़ाने के। इसके बाद भी एक बड़ा शानदार मैच खेला जाएगा। डेरा मुराद जमाली और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे भावलपुर। डेरा मुराद जमाली के प्लेयर एंजॉय करते हुए मैच को। स्विंग किया, पलक झपकते ही बेल रिमूव कर दी है। विकेट कीपर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी विकेट हासिल कर ली है। बड़ा वाइल्ड स्विंग किया था बैच को, बॉल को मिस कर दिया। विकेट कीपर ने पहले अपना टाइम लिया, वक्त लिया, देखा जैसे ही हल्का सा बैट्समैन उनका पांव, पिछला पांव हल्का सा आगे पीछे हुआ, बेल उड़ाया। लेग देखते हैं क्योंकि रेफर कर दिया है थर्ड अंपायर को। विकेट कीपर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, काफी यकीन है उनको अपनी स्टंपिंग एबिलिटी पर। अब तमाम निगाहें टीवी अंपायर पर।
लीगल बॉल मिस कर दिया था पूरा। बॉल पकड़ लिया विकेट कीपर ने। अभी वेट किया और अभी वेट कर रहे हैं उन्होंने सही। और बहुत चालाकी, बहुत ही क्लेवर क्रिकेट खेली है विकेट कीपर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाँव उनका हवा में है, पाँव उनका हवा में, और विल रिमूव कर दिया। बहुत ही समझदारी का मुजाहरा। जितनी यहाँ पर नंबर मिलने चाहिए चालाकी के, उसमें से 10 नंबर। बॉल पकड़ लिया, देखते रहे। वो जानते थे कि सर्वर शायद एक कदम क्रीज से बाहर जाएं, पॉपिंग क्रीज से। वेट किया, फौरन बेल रिमूव नहीं किए, लेकिन जैसे ही देखा कि अंपायर जो सर्वर है उनका एक कदम जो है पॉपिंग क्रीज से बाहर हुआ, पलक झपकते ही बेल रिमूव किए। और यहाँ से अगर विकेट आती है हैदराबाद की तो एक बहुत बड़ी विकेट होगी और अपनी जीत के मजीद करीब होगी हैदराबाद। अब ये थोड़ा बेहतर एंगल है, जूम इन किया गया है थर्ड अंपायर के लिए, क्योंकि हर एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाँव हवा में लगाई रहा है। यहाँ पे बेल रिमूव कर दिए गए हैं। काफ़ी टाइट कॉल होने वाला है ये, और ये आसान नहीं होने वाला ये वाला डिसीजन थर्ड अंपायर के लिए। अब्दुल मुकीत अपना पूरा वक्त ले रहे हैं कोई भी डिसीजन देने से पहले। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि खतरा है, और लेकिन नॉट आउट करार दिया। जो बेनिफिट ऑफ द डाउट था उसको बैटर को दिया गया, और यू नॉट आउट बिग स्क्रीन के ऊपर। बड़ी चीज़ ये है कि एक डॉट बॉल आई है, और अब देखें कि रिक्वायर्ड रन रेट कितनी हद तक बढ़ चुका है, 18.7। और एक मरतबा फिर बहुत तेज़ बल्ला घुमाया, लेकिन इस मरतबा काफ़ी क्विकर बॉल किया, बड़ा तेज़ गेंद किया दानियाल ने, जिस पर बीट हुए 16 ओवर के अख्ताम पर। फाटा 120, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हैदराबाद के लिए अभी फाइनल के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे इस मैच में, अगर वो फतेहयाब होंगे, क्योंकि फाटा ने पिछले 2 मैच दोनों में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद एक मैच जीता, एक मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और आज अगर हैदराबाद हराएगी फाटा को तो ये दो टीमें दोनों के पास 2-2 मैचेस होंगे। तो ये ग्रुप भी बड़ा जो है वो दिलचस्प होने वाला है, और एक ही टीम जो है वो क्वालिफाई करनी है। हमने देखा कि दूसरे ग्रुप में तो काफ़ी ज़बरदस्त टाकरा है, और अगर आज फाटा हारती है, जो नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है फाटा के लिए, तो एक मरतबा फिर जो है रास्ते हमवार हो जाएंगे फाइनल के लिए हैदराबाद, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है हैदराबाद ने। पिछला गेम जो था उसमें बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है हैदराबाद ने। ग्रुप ओपन हो जाएगा, दोनों टीमों के लिए इक्वल जो है वो चांस होगा फाइनल के क्वालिफाई के लिए। और अगर फाटा आज फतेहयाब होती तो स्ट्रेट फाटा जाती फाइनल्स के लिए। फाटा के लिए इस लिहाज से यह अहम मैच था, लेकिन इस वक्त उनकी सूरत हाल जो है वो जीत के नुक्ता निगाह से काफ़ी गंभीर है। 121 पर 5, 16 ओवर एक गेंद के बाद, जबकि ताकुब जो है वो तो एक बड़े स्कोर का एक मोनूमेंटल टारगेट है। जैसे आप देख सकते हैं 77 रन चाहिए 22 गेंदों में, तो मुश्किल सूरत हाल है। नोमान हस्ब रवायत तभी तुली गेंदें करते हुए वो कुशन नहीं देते बैटर को कि उसको ड्राइव की गेंदों को ड्राइव किया जाए या कट किया जाए। बहरहाल ये क्रिकेट है, गाहे गाहे बैटर अटेम्प्ट करते हैं ऊंचा स्ट्रोक खेलने की, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। 21.7 एक जैसा एक बड़ा फी ओवर रन रेट दरकार है। ऑफ साइड पर ड्राइव, सिंगल होगा। ये बहुत दबी तुली बॉलिंग जारी है नुमान की, और वो जानते हैं कि जितने ज़्यादा रन से इस मैच में फतेहयाब होंगे उनका नेट रन रेट भी उतना ही बेहतर होगा, तो इसलिए ज़्यादा रन्स नहीं दे रहे नुमान
ने आज बेहतरीन बॉलिंग की है अपनी टीम के लिए। बहुत आला यार नवीन भाई। देखिए बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे, जहाँ ज़्यादा आगे कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक होल में गिरी हुई बॉल थी अभी। देखिए T20 में जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो इकॉनमी है कि आप फी ओवर कितने रन दे रहे हैं। 3 ओवर 5 गेंदों के बाद सिर्फ 22 रन दिए नोमान ने। ये उनकी जो एक्यूरेसी है और उनकी जो समझ-बूझ है वो उसका एक बोलता सबूत है। वो जानते हैं, समझते हैं गेंद कहाँ करनी है, किस बैटर को। अब ये देखें बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर को एक बेहतरीन गेंद थी। तो इस तरह ये मजबूती तौर पर 17वां ओवर ख़त्म हुआ। फाटा 124 5 विकेटों के नुकसान पर। जाओ जाओ। क्रिकेट में कोई बात रफ़े आखिर नहीं है, लेकिन 24.67 अब तो 3 ओवर बाकी हैं उसमें। ये फी ओवर अगर औसत जो है वो देखी जाए तो सरवर वसीम के लिए ये काम मुमकिनात में से तो है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टारगेट को और इस हदफ को और इस औसत को अचीव करना सरवर और वसीम के बस का रोग नहीं। 12 और 2 रन पर बल्कि बैटिंग कर रहे हैं। हस्टैंड बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये पहली गेंद करेंगे स्टेयर थर्ड मैन की जानिब और उस जगह पर गया जहाँ पे आम तौर पर कोई फील्डर नहीं होता। 4 रन हासिल किया सरवर ने। तवातर के साथ अटेम्प्ट करें, करीब ले जाएं और शगाफ को कम से कम करने की अव्वलीन कोशिश करें। बाद में अगर कोई मोर्चे के करीब करीब बात होती है तो आप मैच जीत भी सकते हैं। सोचा समझा स्ट्रोक नहीं था, ये ऐसा लगा घबरा के पीछे हुए हैं हसनैन की पेस से। ये देखिए काफ़ी पीछे निकल गए थे, हल्का सा एज लगा। विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से होता हुआ बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार। अभी ये रफ्तार थी और एक बॉलर का दबदबा था। उनकी एक शोहरत है। ज़ाहिर कि हसनैन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी थोड़ा टीम में वापस आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये जो गेंदें हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। बल्कि मेरे ख्याल में इसको हिट लगाने की जो एक कोशिश है उसमें 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 वो मयार होना चाहिए। आप टेल में भी अगर बैटिंग कर रहे हैं तब भी आपको स्लॉग करना आना चाहिए, मिडिल करना आना चाहिए। लेकिन सरवर फिल वक्त ये इस खूबी से खाली हैं। दोबारा देखें एक और ओवर पिच गेंद, इस बार बैट के ऊपर से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। ज़ाहिर ये एक ओवर पिच गेंद थी, लेकिन रफ्तार ने और किसी हद तक स्विंग ने सर्वर को मौका नहीं दिया कि वो इसको हिट आउट करें। गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में, काफ़ी आगे पड़ी हुई गेंद, बल्ले को बहुत पीछे ले गए थे। हर मरतबा पीछे हट रहे हैं, ऊपर चढ़ के खेलना चाहिए इन्हें। मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है। पिछली गुज़िश्ता दोनों गेंदों पर हमने देखा कि अगला कदम बहुत ही पीछे की तरफ जानिब चला गया। इसको अगर फ्रंट फुट पे आके इसको ड्राइव मार सकते थे, ये पिछला बॉल को पुल कर सकते थे, तो ये बेहतर टेक्निक होती। ज़ाहिर कि एक मुस्तैद बैट्समैन की एक टेक्निक होती है, वो एक बेहतर तरीके से गेंद को देखता है। फिर ओवरऑल अगर जो हम सूरत हाल देखें तो इसमें बगाड़ पैदा हो चुका है। और ये वो गेंद जिसको खेलने की नाकाम कोशिश की बैटर ने, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। पुल शॉट, कट शॉट, ड्राइव, ऑन ड्राइव, ये वो बैटर लगा सकते हैं जो मुस्तनद हों। और ये मुस्तनद इदारा है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। 25 years, a quarter century of building a legacy। बीट हो गए। तवातर के साथ ऐसा हो रहा है। और हसनैन तेज़ गेंदें कर रहे हैं, पटक कर गेंदें कर रहे हैं। और जहाँ तक बैटर का ताल्लुक है वो लाचार और नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सरवर ने काफ़ी कोशिश की है, मकदूर पर कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो जो एक ऐसी कोशिश है जिसमें वो चौका छक्का लगाने के लिए सरगर्दा है, उसमें कोई कामयाबी ना तो मिली है और ना बज़ाहिर कोई मिलने के इम्कानात हैं। वो अलग बात है कोई नरके में गेंद आ जाए और उधर से कोई छक्का हो जाए, लेकिन कहना होगा कि हसनैन ने नबी तुली तेज़ गेंदें की हैं।
2 ओवर 5 गेंदे 17 रन, एक अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आज अभी तक अच्छा दिन रहा है फॉर हैदराबाद। फाटा की टीम जो है उस पर ज़बरदस्त प्रेशर है। ये एक अटेम्प्ट थी सिंगल के लिए। तो इस तरह अब 18 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। फाटा 129 5 विकेटों के नुकसान पर। बहावलपुर की टीम के खिलाड़ी गद्दाफी स्टेडियम में आ चुके हैं और बखौस मैच को देख रहे हैं। ये गेंद की सीम आपने देख ली है। जब इस तरीके से गेंद को होल्ड किया जाए तो इसका मतलब ये है कि बैट्समैन की कोशिश है, बॉलर की कोशिश रादर शहरयार की, वो गेंद को बाहर निकालें। बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद की। सरवर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, वसीम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कुछ रन बन जाएं, लेकिन वो हनूज दिल्ली दूरस्त है जो एक बड़ा टारगेट है। 198 आपके सामने 198, तो काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर। मुमकिनात में से तो अब कोई चीज़ बज़ाहिर कोई उम्मीद भी बार नज़र नहीं आती, क्योंकि ये दोनों बैटर जो हैं ये सॉर्ट ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं या बॉलर हैं। कोई ऐसा अभी तक मुजाहरा बैटिंग का नहीं किया जिससे कि हम अंदाज़ा करें कि ये जो स्लॉगिंग है उसके फ़न से ये आशना है। जहाँ तक शहरयार का ताल्लुक है वो चाहेंगे कि अब इस सूरत हाल में उन्हें कोई विकेट हासिल हो जाए। आज हैदराबाद के बैटर्स ने बेहतरीन बैटिंग की। आगाज़ अच्छा नहीं था लेकिन फिर लोअर मिडल ने बेहतरीन बैटिंग की और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 198 का। इस इवेंट में ये बड़े स्कोर्स में से एक स्कोर है। को बहुत ज़्यादा ऐसे मौके नहीं आए कि हमने 200 के करीब या 190 से ऊपर को ज़्यादा टारगेट देखे हों, और ये एक बड़ा टोटल है। इस गेंद को देखिए, अगर इसको ड्राइव करने की कोशिश थी तो इसमें फिर वो टेक्निक भी होनी चाहिए थी, वो फुटवर्क भी होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। अब चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं वो वाज़िया हो चुकी हैं। अब ये अच्छी पुल है और 6 रन के लिए खेल दिया। ये 6 रन आया तो है लेकिन काफ़ी देर के बाद आया है कि पानी जो है वो सर के ऊपर से जा चुका। अब सिर्फ दोनों टीमों को ज़रूरत है अपने नेट रन रेट को बेहतर करने की। अच्छी पुल थी और बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से गई। काफ़ी बड़ा और लंबा छक्का था ये, अच्छी एफर्ट थी। कुछ एंटरटेनिंग क्रिकेट होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप देख सकते हैं कि 19वां ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, सिर्फ 136 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर 198 बहुत बड़ा स्कोर दिखाई देता है। शहरयार का ये आउट स्विंगर था, बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए वाइड करार दे दिया गया है। मोहम्मद आसिफ अंपायर हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो यहाँ पर ये देखना होगा अब फाटा को इनके जो इश्यूज़ हैं वो किस किस्म के हैं। बैटिंग ठीक करते रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, और ये जो बाद में आने वाले बैटर हैं डाइव और कैच ले लिया है। बहुत अच्छी एंटिसिपेशन, फॉलो थ्रू में आगे निकल गए और लपकते हुए डाइव किया और एक बहुत अच्छा कैच ले लिया। शहरयार ने वसीम के इनिंग का खात्मा हुआ और मजमूई तौर पर ये 8वीं विकेट है जो कि फाटा की गिर चुकी है 137 के स्कोर पर। तो वेल डन शहरयार, अच्छी एफर्ट और गेंद पर नजर रखी और फिर सॉफ्ट हैंड से इसको दबोच लिया और एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये ठीक गेंद थी। फेयर डिलीवरी, एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन इस मरतबा काफ़ी लेट हो गए थे। जो स्टिकर एरिया होता है बैट का टॉप ऑफ द बैट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर बॉल लगा और डाइविंग कैच यहाँ पर शहरयार ने अपनी ही बॉल पर कॉटन बोर्ड किया।
वसीम खान 8 रन बनाने के बाद आउट। फाटा 137 6 विकेट्स के नुकसान पर। खुबैब खलील नए आने वाले बैटर, जाहिर है कि अब इनके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। सिर्फ 8 गेंदें बाकी हैं। रन्स तो अब नामुमकिन है कि फाटा बना पाएगी, लेकिन कुछ रन्स बनाए ताकि अगले जो मैच है इनका उसमें कोई बेहतर परफॉर्म कर पाए। क्योंकि हैदराबाद की यही कोशिश है कि अर्ली जितना जल्दी हो सके, जितना बड़ा मार्जिन हो सके, इस मैच को सिक्योर करें बड़े से बड़े मार्जिन से। जी बड़ा एक मार्जिन है उसके ताकुब में इस तरीके से एक और विकेट गिरी और तारीफ करना होगी इस कैच की, जिस तरीके से आगे गए और तेज हुए, गेंद पर नजर रखी, बैलेंस बरकरार रखा, गेंद को छिलकने नहीं दिया और इस तरह खुशी से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। इस गेंद को ऑफ साइड पर खेला है, 1 रन बनाया, दूसरा बआसानी बनेगा। फाटा की टीम ने पहले बहुत ज़्यादा रन दे दिए और उसके बाद अब 139 पर 6 बैटर आउट हैं। 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। हसनैन अपना चौथा और मजबूरी तौर पर इस मैच का आखिरी ओवर डिलीवर करेंगे। टॉप एज लगा है, विकेट कीपर नीचे सेटल डाउन होते हुए और कैच को मुकम्मल किया। यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर हासिल कर लिया है हैदराबाद रीजन ने। एज लगा था, विकेट कीपर ने अपने पीछे की तरफ दौड़ लगाई और बहुत ही शानदार जज कैच पकड़ा। बिल्कुल एफर्ट नज़र आई है एक मुश्तरका तौर पे हसनैन की और फिर विकेट कीपर की। ये गेंद बिल्कुल ठीक थी। अगला स्टेप जो है वो बॉलिंग क्रीज से पीछे गेंद को पुल किया, गेंद फिजा में गई। ये तरीका होता है कैच पकड़ने का। आप पीछे गए, आपको अंदाज़ा था गेंद कहाँ गिरेगी और बड़े अच्छे अंदाज से इस कैच को लिया विकेट कीपर ने। और इस तरह ये अब 7वां शिकार थे हैदराबाद का सरवर आफरीदी। कैच अकबर, बोल्ड हसनैन 18 रन। फाटा 139 7 विकेटों के नुकसान पर। अब दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। ये ग्रुप भी ओपन हो चुका है। हैदराबाद के पास भी चांस है क्वालिफाई करने का फाइनल के लिए। फाटा अगर ये मैच में फतेहयाब होती तो बआसानी क्वालिफाई करते। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट सिराजुद्दीन का और बिल्कुल भी गुमान में नहीं था हसनैन के इतना बेहतरीन शॉट पहली गेंद पर। 6 रन का इशारा अंपायर का। ये सिराज का कॉन्फिडेंट आगाज है। पहली ही गेंद पर बिल्कुल सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला और उम्दगी से पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। काफ़ी आगे पड़ी हुई गेंद थी। बड़ी ही अच्छी साइट है अगर इस गेंद को देखा जाए। छक्के के सूरत में हमारे बिल्कुल नीचे 6 रन के लिए गेंद बाहर जा चुकी है। हसनैन गेंद करेंगे। इस बार गुस्से से गेंद को शॉर्ट किया और गेंद को ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की। अभी क्या बातचीत कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं सिराजुद्दीन कि जो मैंने करना था वो मैंने कर दिखाया। अब आप गुस्से से जो मर्जी जेस्चर्स दें, ये तो वो पहले वाला एक कैच है विकेट कीपर के हाथों, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिराजुद्दीन छक्का लगा चुके हैं। ये बॉलिंग 5 टेबल है ग्रुप बी की। फाटा टॉप पे है, रावलपिंडी
इसके बाद है फिर 2-2 पॉइंट हैं हैदराबाद के बाद दीगर टीमों के भी। सकते हैं मेरे ख्याल में इस किस्म की इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नो बॉल करार दे दी गई है, 10 रन से बाहर थी, काफ़ी ऊपर गई और नो बॉल के बाद अब ये फ्री हिट का इशारा है कि जहाँ चाहे आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। ये एक सहूलत होती है बैटर के लिए नो बॉल के बाद। और एक ज़ाहिर है जो बॉलर है उनके लिए ये एक मुश्किल वक्त होता है कि बैटर जो मर्जी चाहे और वो पूरी अटेम्प्ट करते हैं कोई ऊंचा स्ट्रोक लगाने की, चौका या छक्का। देखना ये होगा कि अब सिराज अंपायर ने रोका है और वो अंदाज़ा हुआ कि शायद वो टीवी अंपायर से बात करना चाहते हैं, लेकिन अब ये बात जो होने जा रही है ये किससे मुतल्लिक़ है। वेरी इंटरेस्टिंग। ही इज़ टॉकिंग टू द टीवी अंपायर हु इज़ अब्दुल मकीद। क्लियर हो गया। हसन एक मरतबा फिर गेंद करेंगे वाइड। फॉर द टाइम बिंग ये एक कशमकश है सिराजुद्दीन और हसनैन के माँ बहन। छक्का खाने के बाद हसनैन काफ़ी बदमज़ा हुआ है। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद की, उसके बाद अब वाइड गेंद कर दी है, क्योंकि आखिरी लम्हात में भी वैसे कोई भी बॉलर नहीं चाहता उसको सीधा छक्का लगे उनके सर के ऊपर से, चाहे वो T20 क्रिकेट क्यों ना हो। और फिर वो भी टेल एंडर हैं सिराजुद्दीन, बुनियादी तौर पर तो बॉलर हैं। अब इस गेंद का क्या करेंगे ये देखना होगा। कोई गेंद ऐसी नहीं हो रही जिससे सही तरीके से नबत आजमा हो सिराजुद्दीन। इस बार बीट हो गए। खेल के बाद बड़े दिलचस्प पहलू होते हैं ये। 20वें ओवर की 5वीं गेंद होगी। सिराज ये चाहेंगे कि इनको कोई आगे गेंद कर दें, उनके नरगे में, उनके रडार में आ जाए, उनके बैट के रडार में गेंद आ जाए, लेकिन हसनैन तजर्बाकार हैं, उन्होंने अभी तक कोई गेंद आगे नहीं की। इकबाल एंड से गेंद कर रहे हैं मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग। ये वो फील्डर हैं जो कि ऑन साइड रखे गए। इस गेंद को कट किया और गेंद 4 रन के लिए जाके बाउंड्री लाइन को टकरा चुकी है। तो ये बिलाकर बाउंड्री हासिल कर ली है सिराज ने। वो स्लॉग करना जानते हैं और इसमें हसनैन उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन एक शॉर्ट गेंद थी जो कि ऑफ साइड तो ऑफ स्टम्प थी, इसको जोरदार तरीके से कट किया और इस तरह एक बाउंड्री हासिल की। अब लगातार आप लेंथ बॉल कर रहे हो, फिर बैट्समैन भी ये गुमान कर ही लेता है कि अब भी मुझे शॉर्ट पिच बॉल आएगी। इस मरतबा ऐसा लगा कि पूरी तरह तैयार खड़े थे सिराजुद्दीन और बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट 4 रन के लिए। आखिरी गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो इस तरह 151 7 खिलाड़ी आउट और ये 20 मुकर्रर ओवर थे। नॉट आउट रहे खुबैब 2 पर, सिराजुद्दीन 10 पर। हसनैन का आखिरी ओवर ख़त्म हो चुका है। तो एक बड़ा मार्जिन है जिससे कामयाबी हासिल की आज हैदराबाद ने। बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में आज हैदराबाद के बैटर्स और बॉलर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और किसी भी मौके पर फाटा के लिए इम्कानात नहीं थे कि वो इस मैच को जीतने की पोजीशन में आते। तवातर के साथ विकेटें गिरी, रन रेट भी बड़ा उसको वो गिरावट का शिकार रहा और इसमें तारीफ़ करना होगी स्पिनर्स की और पेसर्स की हैदराबाद के। उन्होंने नैगिंग लाइन और लेंथ से गेंदें की और खुल कर नहीं खेलने दिया, विकेटें भी गिरती रहीं। तो ये सब कुछ ऐसे हुआ जो कि लग रहा था कि हैदराबाद के लिए एक ज़बरदस्त जीत मुमकिन होने जा रही है। आप देखिए 46 रन का बड़ा टारगेट, बड़ा एक शगाफ है जिससे हैदराबाद ने कामयाबी हासिल की फाटा रीजन पर। तो हैदराबाद के लिए एक बड़ी विक्ट्री है और ये वो आखिरी खेल के मराहिल होते हैं। एक रस्म होती है जब खिलाड़ी जो बॉलिंग करने वाली टीम है और बैटिंग करने वाली टीम है ये आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस तरह मैच जो है वो एक अच्छे जेस्चर्स के साथ खुश रसूबी से ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं कि ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो लाजमी हैं खेल के हवाले से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लव, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, क्रिकेट सब कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। और अब ये ज़ाहिर है मैच तो ख़त्म हो गया, अब नाउ दे आर फ्रेंड्स। लेकिन जब मैच जारी होता है तो तन मन धन की बाजी लगाते हैं बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर्स और ये सब कुछ हमने आज काफ़ी हद तक यहाँ पर देखा। लेकिन हैदराबाद ने अपनी जो कहना होगा हाकमियत इस मैच पर इब्तदाई से बरकरार रखी और जब 198 रन हो गए तो फिर मुश्किल हो गया फाटा के लिए कि इस मैच में वो किस तरीके से वापस आएँ। ज़बरदस्त हाईलाइट्स थी, ज़बरदस्त बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस थी। दोनों मैदान में दाखिल हुए और दोनों
ओपनर्स भी एक कामयाबी हासिल हुई। ये ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर और सन्नाटेदार ड्राइव ऑफ साइड पर टॉप एज, एक और कामयाबी। पुल करने की कोशिश और उसमें नाकामी। गेंद सीधी विकेट कीपर की ग्लव्स में। विकेट कीपर के लिए आज अच्छा दिन रहा। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर ये काफ़ी ज़ोरदार हिट थी और अपनी ही गेंद पर पूरी शिकार किया। बैटर को ये पुल थी डीप मिड विकेट की जानिब छक्के के लिए और ये एक अच्छी अटेम्प्ट बॉलर की। कॉट एंड बोल्ड, अच्छा मुजाहरा। ये टॉप एज लगा और विकेट कीपर बड़े अच्छे तरीके से पीछे गए और गेंद को ले लिया, कैच ले लिया। ये सीधी ऑफ साइड पर ड्राइव थी 6 रन के लिए। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस तरह हैदराबाद ने इस मैच में फाटा को शिकस्त दी और एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। ये फाटा रीजन का आप बैटिंग कार्ड देख रहे हैं। 55 रन बनाए नईम ने, 19 रन बनाए समीउल्लाह ने, 18 रन बनाए सरवर ने और 10 रन नॉट आउट रहे सिराजुद्दीन। 151 for 7 ये परफॉर्मेंस थी। 16 एक्स्ट्रास के रन भी शामिल थे। और जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, शहरियात ने 3 खिलाड़ी आउट किए 32 रन देकर 4 ओवर्स में। 2 विकेटें हासिल की जवाद ने 29 रन देकर और फिर नोमान ने अच्छी बॉलिंग की 4 ओवर 22 रन से कोई विकेट नहीं। की इकॉनमी जो है सबसे बेहतर रही, जबकि 1 विकेट हासिल की 32 रन देकर 4 ओवर्स में। दानियाल ने ऑल ऑफ विकेट आप नीचे देख सकते हैं। 20 ओवर में 16 एक्सेस के रन भी दिए गए। 151 7 विकेटों के नुकसान पर यह स्कोर रहा फाटा का। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आबूधाब के साथ लाइट्स टावर ऑन है और आप अगर देखना चाहें तो गद्दाफी स्टेडियम में आके देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है। ये मैच समरी है। हैदराबाद रीजन 197 for 5 20 ओवर्स में और इसमें शजील ने 56 रन बनाए, अकबर ने 51 रन बनाए, सुलेमान ने 24 रन बनाए। ये स्ट्राइक रेट इनका बहुत अच्छा रहा। सरवर ने 2 और फिर सिराजुद्दीन ने 2 खिलाड़ी आउट किया। आसिफ ने भी 1 विकेट हासिल की। फिर 151 रन बनाए। फाटा की टीम में ढेर हो गई। 48 बल्कि 46 रन से कामयाबी हासिल की हैदराबाद में। इसमें नुमाया किरदार बहसीत बैट्समैन नईम का रहा, जिन्होंने 55 रन बनाए। समीउल्लाह ने 19 रन बनाए, सरवर ने 18 रन बनाए। तो इस तरह ये मैच इख्तिताम पसीर हो गया है। नीचे प्रेजेंटेशन की तैयारी की जा रही है। अगला मैच जो है वो बहावलपुर रीजन वर्सेस डेरा मराज जमाली होगा और ये मैच दिलचस्प होना चाहिए। बहावलपुर पुरानी टीम है और ये लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होगी कि फॉर्म गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। और ये इस सूरत हाल है यहाँ पर। आपसे कुछ देर बाद नीचे प्रेजेंटेशन होगी, इसके लिए हम आपको नीचे लेके जाएंगे, लेकिन इस दौरान और इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं।
Welcome to the post-match presentation of match 15 of ABS National T20 Qualifiers, where FATA took on Hyderabad, and Hyderabad won by 46 runs. It was a convincing victory for them. To start off the presentation, let me welcome Mr. Usman Arshad, Chief Curator, PCB, as our guest. Thank you, sir, for your presence. Moving on to the player of the match. It was some innings, and for his brilliant, blistering innings of 51 of just 17 deliveries, it's Akbar Khan. Akbar Khan, please come and collect your player of the match from Mr. Usman Arshad. बहुत ही शानदार इनिंग्स थी, 5 छक्के लगाए, 3 चौके और 3 कैच. अकबर, आपसे बात करेंगे. पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपको पहला मैच खेला और शानदार इनिंग्स, प्लेयर ऑफ द मैच. क्या फीलिंग्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी इनिंग खेला. आप बताएं, अगर कोई इतनी अच्छी इनिंग खेले तो उसकी फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है. थोड़ा सा बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट से पहले क्या प्रिपरेशंस की, क्योंकि आप कीपर भी रहे हैं, T20 फॉर्मेट था, किन चीज़ों पे काम करते रहे? बस यही प्रिपरेशन थी कि जो मेरा काम है विकेट कीपिंग और बैटिंग, बस उसी की प्रैक्टिस करता रहा. और इस 50 के लिए तो मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा हमारे हेड कोच रिजवान भाई का, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया. शुरू के 2 मैच में बाहर था, मगर वो बहुत कॉन्फिडेंस देते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिला मुझे मिल गया. और जिस टाइम पे आप गए उस टाइम पे मुश्किल में थी टीम, थोड़ा रन्स भी आपको लगाने थे, विकेट्स भी बचानी थी, तो क्या माइंडसेट था, क्या फोकस किया हुआ था उस टाइम? माइंडसेट यही था कि जो मेरा नेचुरल है मैं उसी पे ही रहूँगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मेरा स्टाइल है और मैं इसी तरीके से खेलता हूँ. अच्छा, हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर तो बहुत है, मगर मैं शुरू से कामरान अकमल को बैटिंग में फॉलो करता हुआ. चलें, ऑल द बेस्ट. उम्मीद करते हैं फ्यूचर में और ऐसी इनिंग्स देखने को मिलेंगी. थैंक यू. It was a great innings of 51, just 17 deliveries. Now, I would like to call Mr. Asif Afridi, the captain for FATA, who ended on a losing side tonight. आसिफ, पहले बात करते हैं बॉलिंग की. एक टाइम पे हैदराबाद को आपने पकड़ लिया था, 125 पे जो है वो 4 विकेटें थी. क्या लगता है कि प्लान सही नहीं कर पाई, एग्जीक्यूशन नहीं हुई बॉलर से? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में जितना था हमारे फास्ट बॉलर का जॉइन में उनको जो 4-5 ओवर्स थे, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है. वो जो रोज़ा था उनका, तो काफ़ी प्यास लगी थी, बार बार मुझे बता रहे थे. मैंने कहा यार अब जो भी हो, अब एज अ प्रोफेशनल आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो क्रेडिट बैट्समैन को देना होगा. जिस तरह एंड में उन्होंने फिनिश किया, जिस तरह वो खेलें, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले. अगर बैटिंग की बात करें, जो एक चैंपियंस की बॉडी लैंग्वेज लगती है वो बैटिंग में भी नहीं नजर आई, स्ट्रगल नजर आई है. क्या लगता है क्या कमी रहेगी? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये तकरीबन हमारा तीसरा मैच है कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो थोड़ा फेल हो रहे हैं. मेरे ख्याल में हमने थोड़े बैट्समैन को शफल करना होगा, थोड़ा सा प्लान करना होगा नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन में अब फिर हम आ गए हैं. तो इंशाल्लाह उम्मीद है चैंपियंस की तरह लड़ेंगे, आएंगे वापस फाइट करेंगे, तो उम्मीद इंशाल्लाह कि जीत जाएंगे लास्ट मैच. और ये पहला मैच था जिसमें आप लोगों ने चेस किया, तो ये भी एक फैक्टर था साइकोलॉजिकली या नहीं? थोड़ा बहुत फ़र्क इसका भी पड़ता है, क्योंकि हम मेंटली इसी के लिए रेडी थे कि हमने पहले ही आना है हमने. लेकिन मेरे ख्याल में अब जिस तरह सिचुएशन में है कि इसको हमने नहीं देखना, अब थ्रू आउट जाके हमने मीटिंग करनी है और कोशिश करनी है कि आखिरी मैच में सही प्लान करके आएँ, और जो हम प्लान करें उसी को हम अचीव करें. चलें, हार्ड लक टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट Thank गेम. you. Now I would like to invite Shajil Khan, the captain of Hyderabad. They ended and won this game convincingly by 46 runs. शजील, मुबारक हो, बहुत अच्छा कमबैक एक बड़ी टीम के खिलाफ. पहले बताएं, जैसे आपने बात की थी बैटिंग में थोड़ा सा आज आपका रोल डिफरेंट था, तो किस तरह टीम को मोटिवेट किया इसके लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने मैच से पहले यही बात की थी कि मेरा बैटिंग के लिए अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, और प्लान भी यही था कि मैं जितनी देर अंदर रहूँ, जितना लंबा लेके जा सकूँ. शुरू में नो डाउट कि स्टार्ट थोड़ा स्लो था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम पावर प्ले के अंदर विकेट्स ना दें, और ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही विकेट और कंडीशन के हिसाब से. तो प्लान यही था कि मैं जितनी देर अंदर रहूँ और जितना लंबा लेके जाऊँ तो टीम को फ़ायदा होगा उससे. और क्या कहना चाहेंगे अकबर खान की शानदार बिल्कुल इनिंग्स जी, के बारे में? अकबर ने एकदम सरप्राइज़ किया है, और कैम में भी माशाल्लाह वो ऐसा नहीं नज़र आया जैसा उसने एकदम स्टेज पे आके, पहला मैच था, प्रेशर होता है. नो डाउट अकबर ने जो शॉटें मारी हैं, जो उसी की इनिंग का डिफरेंस था, और वही हमें डिफरेंस मैच के अंदर लेके आया वापस. बैटिंग का तो आपने बात की, लेकिन बॉलिंग में भी क्योंकि टारगेट बड़ा था, लेकिन फिर भी बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग नजर आई. आज लेंथ फास्ट बॉलर्स की डिफरेंट थी. बिल्कुल, पहले 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स की तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी. उनको बॉलिंग उनको बैठ के दिखाई है और उनको बताया है. हसनैन ने काफ़ी सपोर्ट किया है जूनियर बॉलर्स को, तो और बाकी स्पिनर्स के लिए नोमान हमारे साथ हैं, उन्होंने सबसे बात की है. तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि जितनी कम से कम गलतियाँ करेंगे और उतनी फिर हमारा मैच हमारे कंट्रोल में रहेगा. चलें, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आपको भी मुबारक, टीम को भी. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.
Well, that concludes the post-match presentation, but stay tuned because the next match is lining up. It's Dera Murad Ali taking on Bahawalpur. Down the ground, picked up nicely. शर्जील खान ने अपने 50 रन किए मुकम्मल. Oh, picked up beautifully. Brilliant half century from Akbar. Picked up. That's where he likes it. Straight up, ballooned up in the air. Easy catch taken.